Afternoon all. Afternoon. You hear me? You hear me? Voice clear? My voice clear? Just will start without wasting any time. Start. चलो 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 right, no problem at all. And please, dear students, just listen to me. I have not taken even a single question from XE previous papers. First shock हो गए बच्चे. Sir, you are giving questions for XE and you have not taken even a single question of XE. ये कैसा हो सकता है sir? Good. Already in XE, questions have appeared. So the chance of appearing same questions is very rare. So what I am trying to do is, I have given different questions. I have taken from CSIR and I have taken from standard books. And CSIR में एक आता है sir, engineering sciences का. So I have tried my level best to include wide varieties of questions. Don't think that same questions are going to come. No. Let me explain very clearly. Concepts related to this will come. So I will try my level best to include all varieties. The focus is on entropy, pure substances, and like mixture of gases, a bit of thermodynamic relations. This is the focus. So मैं कोशिश करूंगा कि all varieties of questions are covered and with concepts. It's not just we are doing questions. No, concepts related to this, I will do it. And it's a request to all of you. And one more thing, sirs, I will not waste your time because I respect your time. And therefore, I will not waste time in calculations. I will not wait for you to give answers. Already, every calculation is made. I will just give you but the concepts. And if the value is there, I'll put that value. And calculation part, you have to do it. Is it okay, sirs? Is everything fine? Is it okay? Bolo, sirs. Shall we continue? Bolo, bolo. Shall we continue? So let's start, my dear students. Let us not waste time. So I will try around 44 questions so that all varieties are included. So let me start with a simple question. So please, dear students, questions थोड़े tough है, sir. I'm not saying all are tough. Some questions are tough. Some questions are average. Some questions are easy. It is a mixed bag of all the things. Okay, chalo. Let's start. So if there is any difficulty, Tanush will call me. Okay, no problem. पहला question, simple question ले लेंगे sir. पहला simple question ले लेंगे. Which of the following are true for pressure, temperature and density? Pressure, temperature and density. Can I call these as the properties, my dear students? Are these properties? Yes, they are properties. If they are properties, and properties are always point functions. Yes, properties are always point functions. And you also know that properties are exact differentials. All these are properties, they are exact differentials. So the answer is B and D. The answer is B and D because heat and work, agar heat work आता है यहाँ पे, had it been instead of pressure, temperature, density, if it is heat and work, they will be path function and inexact differentials. Is it okay, my dear students? Is it okay? बोलो रे, बोलो. Okay, we'll go to the next question. हाँ, दिख रहा है सर? Can you see this question? Can you see this question? दिख रहा है सर? एक सेकंड मैं चेक करूंगा.
सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इज इट विजिबल? पीडीएफ भी मिलेगा. And this temperature is 120 degree centigrade and this heat transfer is 8 kilowatt. This is given as Q2 and this work is given as 1 kilowatt. This is given as 1 kilowatt and this is entering and this is given as 2 kilowatt and this is coming out and this is 50 degree centigrade and this is 9 kilowatt. This is 9 kilowatt. At least can you see now? Dear students, at least can you see now? Now at least can you see now? Can you see? Let me read the question, sirs. Let me read the question. An inventor claims to have developed a cycle heat conversion system which is simultaneously producing power, refrigeration and output by interaction with थर्मल रिजर्वायर्स. तो ये दिया है. नाउ एटलीस्ट इज इट ओके नाउ? ये क्वेश्चन में थोड़ा लाइक प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है सर, बाकी में कोई दिक्कत नहीं. सो ये दिया है. नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? इट्स नॉट फीजिबल एज इट वायलेट्स फर्स्ट लॉ. इट्स नॉट फीजिबल एज इट वायलेट्स सेकंड लॉ. इट इज फीजिबल एंड रिवर्सिबल. इट इज फीजिबल एंड इरिवर्सिबल. तो हाउ डू वी डू दिस सर? हाउ डू वी डू दिस सर? स्क्रीन ब्लर आ रहा है. एक सेकंड. ये क्लियर है? ये क्लियर है सर? कोई नहीं, ब्लर नहीं आएगा. अब देखते हैं. इज इट ओके ना? एक सेकंड. नेक्स्ट दिख रहा है? एक सेकंड प्लीज. 1 सेकंड प्लीज. नहीं दिख रहा है सर या दिख रहा है? कैन यू सी? दिख रहा है? ऑल ओके ना? इज ऑल ओके? हेलो या नहीं, मैं रीड कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक. ओके 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 ओके. नाउ वेट. एक सेकंड प्लीज. या ओके. नो ये वाला नहीं, ये वाला देखो. अच्छा क्वेश्चन है. प्लीज रीड. बाकी सब ठीक है ना? यस. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम. मैं बताता हूं सर एक्चुअली है क्या है. प्लीज लिसन माय डियर स्टूडेंट्स. लेट मी टेल यू व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. एक सेकंड, मैं थोड़ा ओरिजिनल पेपर शीट लेके आता हूं सर. आई विल टेक द ओरिजिनल शीट एंड आई विल कम. डोंट वरी. Don't worry, sir. Carefully. Now observe here. Yeah. 1 second. Okay, it's fine. अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सर. अच्छे क्वेश्चंस. नाउ द क्वेश्चन इज दिस. लुक एट. This is at 120 degree centigrade and from this this is 8 kilowatt. There is a heat engine and this is developing 1 kilowatt and this is entering. How much is entering? This is 2 kilowatt and this is 0 degree centigrade and this is, how much is this? 50 degree centigrade and this is 9 kilowatt. Okay, 9 kilowatt. Now at least now is it clear? Dear students, is it clear? अब देखो ये बोल रहा है. Now he is asking what type of, is it possible or impossible or so? First of all, let us take our system. Please understand my dear friends. मैं इसको सिस्टम मानूंगा सर. देखो
I will take this as the system, this heat engine as system. So for this system, this is entering, this is entering, this is leaving, this is leaving. So as per the conservation of energy, total entering should be equal to total leaving. Let's see, sir, how much is entering, how much is leaving. ये अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है. So can I say Q1 plus Q0 is equal to, this is entering, this is entering. So this is 8 plus 2, it is 10. So total energy entering total energy entering is 10. Leaving. So energy out, how much it is leaving? Let's see carefully. This is leaving, this is also leaving. 9 plus 1, this is leaving, this is leaving. 9 plus 1 is 10. So energy in is energy out. Is the first law of thermodynamics valid? Is the first law of thermodynamics satisfied? Please comment में फटाफट बताना sir. Is the first law of thermodynamics satisfied? Yes, it is satisfied. Now, याद रखना, just satisfying first law of thermodynamics does not ensure me this is possible. So it should also satisfy the second law of thermodynamics. What is second law of thermodynamics? Cyclic integral of d dash q by t is less than or equal to 0. If the cyclic integral of d dash q by t is equal to 0, the cycle will be reversible. If this is less than 0, it will be irreversible. If it is greater than 0, it is impossible. So let us check, my dear students, what is happening. Look at carefully. So for this system, this is entering. So to this system, it is added. So this will be plus. And one more thing you have to be very, very careful. When I am applying Clausius inequality, it is only heat temperature, and this temperature should be strictly in Kelvin, So please note down that while applying this equation, work has no role. Please बताइए, are we clear? Confuse मत होना sir. Now ये अंदर आ रहा है, so therefore it will be Q1 by, let us take this as T1. This is also entering, ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, so plus Q0 by, let me take this as T0. I said in Clausius inequality, work has nothing to do. So this is leaving. तो इस सिस्टम से ये बाहर जा रहा है, ये सिस्टम से बाहर मतलब माइनस. So therefore it is 9. I'll write this as Q by T. Let this temperature be T. All temperatures should be strictly in Kelvin. My dear students, all these should be strictly in Kelvin. So this is in Kelvin. How much is this, sir? It is 393. In Kelvin, this is 273. And in Kelvin, this is how much? ये कितना आएगा, sir? 323. Substitute करना. Q1 is 8. 8 by T1 कितना है? T1 is 393 plus Q0. What is Q0? This is Q0. It is 2 by T0. What is T0? It is 273 minus Q by T. What is Q? 9. 9 by, what is this temperature? Convert in Kelvin. It is 323. Anyone, what is the value? Anyone, what is this value? And I am getting this value as negative, na? I am getting this value as negative or positive? I am getting this value negative. This value is negative. What does negative mean? It is less than 0. What does negative mean? Less than 0. Whenever this value is less than 0, yes, the cycle is possible. It is satisfying second law. It is satisfying first law. First law, conservation of energy is satisfied. Second law, this Clausius inequality is satisfied. So therefore, it is possible. But I got this value less than 0, means the cycle is what? Irreversible. Can I say the cycle is irreversible? Bolo sir, kuch nahi bol rahe. Bolo re golu. So therefore, the cycle is irreversible. Yes, ye puch raha hai. Yes, it is feasible and it is irreversible. Please bataiye, are we clear? Abhi warm up ho gaya, sir. Now, let's move to some. Is this okay? Thoda speed badao. Because I have to do many questions. Thoda speed badao. Shall I increase the speed? Okay. Read this question. Please read this question. I request everyone to read this question. Screen में सब clear दिख रहा है sir? Clear दिख रहा है या कोई दिक्कत है? Is everything clear? या फिर ऐसे करता हूं सर, एक सेकंड रुकिए, I'll do like this. एक सेकंड रुकिए सर, प्लीज एक सेकंड रुकिए. So is the screen clear?
ऑल क्लियर एंड विजिबल और इज देयर एनी डिफिकल्टी? ऑल क्लियर एंड विजिबल, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे. इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यू जस्ट इन्फॉर्म मी. प्लीज बताइए, इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर आई विल प्रोसीड. थोड़ा ब्लर है क्या? तो समवन सेड थोड़ा ब्लर है, तो मैं ऐसे करूंगा सर. एक सेकंड रुको. समवन सेड थोड़ा ब्लर है, एक सेकंड रुको. एक सेकंड प्लीज. हेलो. ओके ओके, लेट मी चेक. एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज. तो बच्चे बोल रहे सब क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू. अब कोई नहीं, चेंज नहीं करेंगे सर. एक सेकंड. ओके. आपका वीडियो का क्वालिटी कोई दिक्कत हो सकता है सर. इज एवरीथिंग फाइन? सब क्लियर है ना? बोलो रे. राइट. वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. Now let's take this question. Let's take this question. मैं पीडीएफ शेयर करूंगा सर, मैं शेयर करूंगा सर. डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी. ये क्वेश्चन पढ़िए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है. देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना. ओके, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. चले प्रोसीड सर. अब क्लियर दिख रहा है ना रे? सब क्लैरिटी है. वाह 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 वाह. हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर. इसको इंपॉर्टेंट मानना. सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस है तो ही अटेंड करना, नहीं तो ड्रॉप कर लेना. देखो, an evacuated rigid tank is filled up to certain pressure from a pressurized gas supply pipeline. Consider two cases, both following ideal gas model. Very good. In case 1, the tank is insulated, and in case 2, heat is lost to the surroundings. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर. Now, from the gas in the tank. Okay, ignore kinetic and potential energy effects. Which of the following statements is true? The final mass in case 1 is equal to second mass. The final mass in case 1 is less than this. अब ये सवाल है सर. So it's a very good question, sir. It's a very good question. Final mass in 1 is greater than कौन है ये? ब्रिजेश गुप्ता. See? ओके. मैं कुछ नहीं करूंगा सर. ब्यूटीफुल, आई विल एक्सप्लेन. यू हैव टू डू इट. देखो सर, प्लीज लुक एट व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है. देयर इज अ सप्लाई पाइपलाइन एंड दिस इज कनेक्टेड. दिस इज द सप्लाई पाइपलाइन. दिस इज कनेक्टेड टू अ टैंक. दिस इज अ रिजिड टैंक. देखो सर, and in case 1 it is perfectly insulated. Very good. This is case 1. Let's go to case 2. Same tank, same, and this is the supply pipeline. My inlet conditions, let it be I. My inlet conditions are I. Very good. Now the valve is opened, the gas is entering, and clearly he said ideal gas, and it is a rigid container. So is the volume changing, sirs? No. ध्यान से सुनो sirs, cool रहो आप. Now question क्या है देखो. In both when the valve is opened, and one more thing, initially it is evacuated. It is evacuated. Same, initially evacuated. Great. Look at sirs. Initially it is evacuated. अब देखना. Now, how long it is entering? अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, look at in both the cases. देखो, if you see the question, consider two cases, and
Please observe here. It is filled up to certain pressure. Okay, no problem at all. In both the cases, it is filled up to certain final pressure. Certain final एक pressure को fill up किया. एक केस में इस टैंक को इंसुलेट किया गया. In second case, it is not insulated. So thereby there is a heat transfer from this gas to the surroundings. बोला है वो. Clearly he said. No problem at all. This comes under what, sirs? This comes under what? Unsteady state. ध्यान से सुनो. In unsteady state, I have given some equations. What are those, sir? Let this tank be control volume. Let this tank be control volume. And एक बार देखना, sirs, I clearly told you in my classes, that is from the conservation of mass, rate of change of mass is inlet minus exit. Inlet minus exit. Okay. If I take this as, dear students, if I take this as the control volume, now you tell me, is there any mass leaving the control volume? Is there any mass leaving? Only mass is entering, and just it is getting stored in this. No mass is leaving from the tank, so exit mass is 0. केवल mass अंदर आ रहा है. So therefore, dm by dt in the control volume is equal to m dot I. This is my first equation. No problem at all. And the second equation says energy conservation du by dt in the control volume is equal to, hope you know this equation. See, I am not deriving equation, sir. I am not deriving. M dot I hi plus q dot minus m dot ehe minus wcv. I think you know this equation. Do you know this equation? Do you know this equation, sirs? Yes. Now you tell me. It is simply a tank, and moreover, it is a rigid tank. When the fluid is entering, this is my control volume. Is the tank doing any work? No work is done on the tank, nor this tank is doing any work. Simply water is coming, gas is coming and getting stored. So control volume work is 0. Wonderful, sirs. Second, what is the mass leaving? Only mass is entering, no mass is leaving. So exit mass is also 0. Wonderful, sirs. So now I will write, in first case, look at what is the difference between first case and second case. Only यहाँ पे फर्क आएगा, sir. In first case, the heat transfer is 0, and in the second case, there is a heat transfer. So don't worry. तो पहला केस ले लेंगे, sir. In case one, this is 0. So I will get du by dt in the control volume is equal to m dot I hi. But what is m dot I? What is m dot I? I can write this as du by dt in the control volume. So look at carefully. Now देखो, एक second, my dear students. देखो, du by dt in the control volume is m dot I hi. Du by dt in the control volume is m dot I hi. Okay. Now देखो, m dot I hi. And what is this? dm by dt is m dot I. So therefore, now m dot I can be written as dm by dt in the control volume. Okay. So therefore, du by dt in the control volume is equal to m dot I is dm by dt in the control volume into hi. So you know this hi is not changing with time because my inlet is a big supply line. From supply line, simply the fluid is entering. अब देखो, इसको integrate करना. This is control volume. This is control volume. Let the initial conditions in the control volume be 1. Let the final conditions in the control volume be 2. So 1 and 2 are initial and final conditions in control volume. So if this is, देखो, with respect to time I integrate. अगर हम time के साथ integrate करेंगे, ये तो time निकल जाएगा. If I integrate, don't cancel this. I'm not cancelling this. अगर हम time के साथ integrate करेंगे, तो rate निकल जाएगा. So what is du? I will write this as u2 minus u1. And you have integrated with the time. What is dm? m2 minus m1, and this hi is constant. Can anyone tell what is m1? It is the initial mass in the control volume. What is m1? It is the initial mass in the control volume, and initially it is evacuated. When it is evacuated, what is the initial mass in the control volume? 0. So m1 will be 0. So ध्यान से सुनो sir. You know specific internal energy is internal energy per mass. अगर आपको internal energy चाहिए तो mu लिखेंगे. u1 can be written as m1 u1.
U2 कैन बी रिटन एज M2 U2। तो इधर देखना, कैपिटल U2 इज M2 स्मॉल U2, कैपिटल U1 इज M1 स्मॉल U1 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू HI। वेट सर्स, देखो ध्यान से, what is M1? 0, because it is initially evacuated। M1 is 0, तो ये 0 हो जाएगा, initially evacuated ये भी 0 हो जाएगा, तो M2 U2 is equal to M2 HI। तो M2 M2 is gone, तो U2 will be equal to HI। So it is an ideal gas। For ideal gas you can be written as CVT, and what is enthalpy? CPT। So therefore T2 is equal to, you take CV to this side, Cp by Cv is gamma Ti। What does it mean? So please my dear students understand, अगर ये टैंक initially insulated है, if this is initially insulated, the final temperature in the tank is gamma times Ti when there is no heat transfer from this। तो पूछ सकता सर, so there can be a question, so what should be the final temperature? Obviously it will be greater than the supply temperature। Ti is supply temperature, obviously gamma is greater than 1, so therefore T2 will be greater than Ti। समझ में आ रहा है सर? So therefore ये हो गया। अब इधर आइए सर, फर्क कहां पे आएगा? So where the difference is coming, let me tell you, look at carefully। फर्क यहां पे आएगा, देखो एक सेकंड रुको। So can this be 0 in second case? मुझे बताइए सर, can this be, sorry, can this be 0 in second case? मैं पूछ रहा हूं सर, can this be greater than 0? Can this be equal to 0? No, in second case it is not 0। तो यहां पे पुट करना प्लस Q डॉट। देखो देखो, so same equation I'll take, but ये तो सेम रहेगा because it is the mass conservation। mass conservation में heat तो नहीं आएगा। So this equation 1, देखो whether it is this case or this case, मास का जो एंट्री है dm by dt in the control volume is m dot I minus m dot e। इसमें भी m dot I, m dot e is 0, in this case also m dot e is 0। तो ये इक्वेशन तो अप्लाई होगा। जस्ट I'll substitute, ध्यान से सुनो सर, I'll substitute this value here। ये dm by dt m dot I का यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा सर? इधर देखना, du by dt in the control volume is equal to, देखो एक बार, du by dt in the control volume is m dot I hi plus q dot, m dot I hi plus q dot। wait, so therefore du by dt in the control volume is, already m dot I is known। what is m dot I? dm by dt control volume। so therefore dm by dt in the control volume into hi plus q dot। any problem sirs? any problem sirs? any problem sirs? any problem sirs? no। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना, इट इज ऑल्सो Q डॉट मीन्स हीट पर यूनिट टाइम, पर टाइम। अगर टाइम Q डॉट मीन्स Q by T, टाइम। इफ यू इंटीग्रेट विद टाइम विल गो आउट। सो देयरफॉर du इज इक्वल टू dm hi प्लस Q डॉट। वंडरफुल सर्स। तो कैन आई राइट du एज u2 माइनस u1? कैन आई राइट dm एज m2 माइनस m1? कॉन्सेप्ट देखना आप, qi प्लस Q, ये डॉट निकल जाएगा। प्लीज वेट, बिकॉज यू हैव इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डॉट निकल जाएगा। सो देयरफॉर दिस द वन। अब देखना, कैन आई राइट दिस एज m2 स्मॉल u2? कैन आई राइट दिस एज m1 स्मॉल u1 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू hi प्लस Q। and obviously it is initially evacuated। when it is initially evacuated, what is m1? 0। what is m1? 0। m1 into 0, so this will be m2 u2, correct, m2 u2 is equal to m2 hi plus Q। wait sirs, तो m2 into, इसको इधर लेना, u2 minus hi is equal to Q। any problem sirs? any problem sirs? I will take this। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, आंसर दीजिए। इज इट हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन? लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, इज इट हीट सप्लाई और रिजेक्शन? सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, सो दिस इज रिजेक्शन, सो दिस वैल्यू इज नेगेटिव। आया नहीं आया सर? दिस वैल्यू इज नेगेटिव। आपको आ रहा है सर सभी को? प्लीज आप कुछ नहीं बोल रहे सर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। इज इट नेगेटिव? इट इज अ रिजेक्शन, देयरफॉर नेगेटिव। अब आप बताइए सर, u2 minus hi is equal to Q by m2, mass cannot be negative, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए सर? दिस वैल्यू हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज इट इज हीट रिजेक्शन। अगर नेगेटिव है तो कब नेगेटिव होगा सर, बोलो?
So if this is negative, means I will write U2 minus HI. It is heat rejection negative. Negative means less than 0, or U2 is less than HI, or U2 is CVT2 less than HI is CPTI. Ideal gas hai, U2 is CVT2, HI is CP. So T2 is less than, you bring CV to this side, T2 is less than CP by CV is gamma, gamma TI. Oh my God. अब आ गया पॉइंट, अब आ गया पॉइंट सर, यहां तक सभी को समझ में आया सर? प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ हैव यू फॉलोड? टिल नाउ हैव यू फॉलोड? ललित ने सही बोला, ललित महवार, प्लीज बताइए सर। एक रिक्वेस्ट है सर, अगर अटेंड हो रहे तो कंटिन्यूसली अटेंड होना, नहीं तो मत होना सर। इवन इफ देयर इज अ सिंगल कैंडिडेट अटेंडिंग कंटिन्यूसली, आई विल टेक। इज इट क्लियर सर? यहां गेम पलट गया, वाह, अब आएगा मजा, इधर देखना रे, अब आएगा मजा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस एंड इंसुलेटेड. What is the final temperature? Gamma Ti. And this is the second case. This is the second case. And what is T2? Less than gamma Ti. अब आप बताइए सर, अब आप बताइए, कॉमन सेंस देखना. Definitely when the heat is rejected, the temperature here will be less. Definitely जब हीट जा रहा है तो कम होगा. यहां पे पूरा accumulate हो रहा है, पूरा अंदर आ रहा है, no heat is transferred, तो T2 is gamma Ti. अब आप बताइए सर, finally both are charged to same pressure. Finally both are charged to same pressure. दोनों का वॉल्यूम सेम है. अब देखो, PV is equal to, let the final mass be M2. इस केस में, केस टू में let the final mass be M2 in this case. Don't think that this M2 this M2 is same. ये अलग है, ये अलग है. अब देखो, PV is equal to MRT. Great. What is mass? PV by RT. ध्यान से सुनो सर. In both the cases, it is pressurized to same value. यहां का प्रेशर सेम है, तो ये सेम है. एंड दोनों का वॉल्यूम सेम है सर. आर तो गैस सेम है, तो कहने से मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कहां का टेम्परेचर कम है? T2. अब देखो, दोनों को कंपेयर करना. इट इज गामा Ti, इट इज लेस देन गामा Ti. मतलब दिस टेम्परेचर इज लेस. अगर ये टेम्परेचर कम है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर ये टेम्परेचर कम है तो मास क्या होगा? ज्यादा होगा. तो मास इन सेकंड केस इज मोर देन मास इन फर्स्ट केस. ठोको ताली. इज इट क्लियर? नहीं आया सर किसी को समझ में? सर बुरा लगता है सर. Is it okay? Sir, you are not following. You are not following. You are not following. You people are not following. Is it clear? Clear. Excellent. Thank you. Nimmakayala Dharma Reddy, Dinesh Reddy. Thank you. समझ में आ गया सर? यो involve, interact. Wonderful. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सर. टेक दिस क्वेश्चन. फोर्थ वाला किए सर? फोर्थ वाला का, हाँ, फोर्थ वाला क्यों नहीं किए? लेट्स गो टू फोर्थ. रीड द क्वेश्चन. ये भी थोड़ा ट्रिकी है सर. आई डोंट से देयर इज कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस. इसमें ऑप्शंस में गेम खेल रहा है सर. ही इज प्लेइंग इन ऑप्शंस. देखो सर एक कर रहे तो वो करवाओ बोलते. लेट मी कंप्लीट दिस ना फर्स्ट. इधर देखो, लेनॉइड साइकिल अप्रोक्सीमेट्स द ऑपरेशन. देखो, इज द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम. देखो, द प्रोसेस आर शोन. 1-2 is isochloric constant volume. And let me tell you very clearly. So यहां पे ड्रॉ करेंगे सर, आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. दिस इज अ पीवी डायग्राम. सर माफी चाहता हूं सर, मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं हूं सर, बिकॉज आई डोंट नो यूट्यूब का मतलब क्या है, मुझे पता नहीं है सर. लेकिन रिक्वेस्ट किए स्टूडेंट्स, इसलिए आया सर. 1, 2, 3. What is 1 to 2 process? It is a constant volume. Isochoric volume is constant. Can you tell me, can anyone tell what is the work in 1 to 2? ये 1 to 2 में वर्क कितना है सर? It is a constant volume.
तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क क्या होगा, 0 होगा सर। अब देखो नाउ नेक्स्ट 1 to 2 is isocoric. Heat addition is 230. So the heat supply in 1 to 2 is 230. I'm taking it as plus because heat is supplied. Wonderful students. Now, wonderful students, sir. देखो, let's go to 2 to 3. 2 to 3 is adiabatic expansion and the change in internal energy is minus 75. Is minus 75. इधर देखना. Now, let's go to my dear students, एक second. Let's go to ये वाला कलर ले लेंगे 2 to 3. And 2 to 3 is adiabatic. So heat transfer in 2 to 3 is 0. And one more thing he gave. The internal energy change in, how much is the internal energy change? Minus 75. So can I write, my dear students, 2 to 3 process is taking place from 2 to 3. So what is the change in internal energy? Start हो रहा है 2, end हो रहा है 3. So what is the change, my dear students? Anyone? What is the change? Can I write the change as 3 minus 2? Can I write the change as 3 minus 2? U3 minus U2 is equal to minus 70. Is it correct? क्या ये कलर दिख रहा है सर? क्या ये कलर दिख रहा है सर? दिख रहा है सर? वंडरफुल. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है रे, नहीं दिख रहा है रे. कलर देखता हूं मैं. दिख रहा है ना? वेट. एक सेकंड. दिख रहा है ना? यस, नो प्रॉब्लम. नाउ आई विल गो फॉर, अब देखो, कूल रहो सर, ये दिया है इंफॉर्मेशन. नाउ विल गो फॉर, look at, now we'll go for the 3-1 process. देखो, 3 to 1 is isobaric compression and the heat rejection, focus on the word rejection, is 190. Heat rejection is 190. देखो, 3 to 1 is isobaric and the heat rejected in 3 to 1 is, how much is the heat rejection? And the heat rejection is 190. Should I take it as plus or minus? Dear students, क्या मैं प्लस लू या माइनस लू? आई हैव टू टेक माइनस. एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन? नो. व्हाट इज द नेटवर्क बोला है? देखो सर्स, व्हाट इज द नेटवर्क बोला है. कैन एनीवन टेल मी हाउ डू आई कैलकुलेट नेटवर्क? फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल. व्हाट इज फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल? सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू. सो कैन आई राइट सिग्मा डब्ल्यू एज नेटवर्क? यस. कैन आई राइट सिग्मा क्यू एज नेट हीट? दिस नेट हीट कैन बी रिटन एज हीट इन 1 to 2, हीट इन 2 to 3, हीट इन 3 to 1. मेरा कॉमन सेंस बता रहा है ये वर्क पॉजिटिव आना चाहिए. वाई वर्क पॉजिटिव आना चाहिए? बिकॉज लीनार साइकिल इज अ पावर प्रोड्यूसिंग, इट इज अ क्लॉकवाइज साइकिल. ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स. सो देयरफॉर व्हाट इज Q12? Anyone? What is Q12? It is 230. And what is Q23? Adiabatic, 0. And what is Q31? Q31, it is minus 190. So you will get the network from here. How much is the network, sir? ये देखो 230 minus 190, ये 40 आ रहा है. मतलब ऑब्वियसली ऑप्शंस देखते ही ध्यान से सुनो, ऑप्शंस दिया है यहाँ पे -40, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत है. सो नाउ इट कैन बी सी और बी, एंड बट बी केयरफुल, एक में +155 है, एक में -155 है. ओके, नेटवर्क आ गया. एनी प्रॉब्लम सर? नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? नेटवर्क हो गया. और क्या पूछ रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग 3-1. He is asking the change in internal energy for 3-1 process. He is asking the change in internal energy for the process 3-1. Let's try to do this. देखो एक बार. So let me apply first law for a process. D dash Q is equal to du plus D dash W. So he is asking the internal energy change for process 3-1. No problem at all. Wonderful sirs. कोई problem नहीं है. देखो और कुछ है सर? एनीथिंग मोर? बोलो. सब ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नो. अभी कुछ है सर? किसका पूछा है वो? ही इज आस्किंग फॉर, व्हाट इज आस्किंग? इंटरनल एनर्जी चेंज. Okay, no, bolo sirs. Yes. Someone said -1. Okay, now observe here. Look at carefully. क्या मेरे पास वर्क ऑफ 3-1 है?
देखो एक बार, क्या मेरे पास वर्क ऑफ 3-1 है? बिल्कुल नहीं है सर. एंड वन मोर थिंग, नाइदर द प्रेशर ऑफ दिस 3-1 नॉर वॉल्यूम्स आर नोन, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट द वर्क. तो मैं क्या करूंगा सर, कुछ अलग तरीका सोचूंगा. वर्क कुछ अलग तरीका सोचूंगा. इधर देखो, मेजर इंफॉर्मेशन किस प्रोसेस में दिया है? मेजर इंफॉर्मेशन आई थिंक इट इज इन 1-2. इधर देखो, इट इज इन 1-2. मेजर इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 1-2. कैन आई अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस ऑफ 1-2? यस. अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड रुको. नाउ आई विल अप्लाई फॉर 1-2. कोई दिक्कत नहीं सर. इधर देखो, लेट मी अप्लाई 1-2, 1-2, 1-2. इधर देखो, what is the heat transfer for 1-2? What is the heat transfer for 1-2? It is 230 is equal to du. Can I write this as 1-2 is process final minus initial plus work in 1-2? What is work in 1-2? It is 0. Can I write u2 minus u1 is equal to 230? Yes, I can write. अब देखो मेरे पास, my dear students, now I have, एक second please. हाँ, मेरे पास u2 माइनस u1 है एंड आई ऑल्सो हैव u3 माइनस u2. तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर? एक बार देखना सर, इफ आई ऐड, इज इट ओके? इज इट ओके? अच्छा, ये 75 है दिया क्या? एक सेकंड में चेक करता हूं. इज इट 75? यस सर, इट्स नॉट 70, इट इज 75. इट इज 75 दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं. सो लेट्स ऐड दिस टू. u3 माइनस u2, देखो u3 माइनस u2 प्लस ये वाला, हाउ मच इज u3 माइनस u2? दिस इज 75. एंड ये ऐड करो u2 माइनस u1, ये कितना है सर? ये कितना है सर? 230. तो प्लस u2 माइनस u2 इज गॉन, यू विल गेट u3 माइनस u1. कितना आ रहा है सर? अगर दोनों को ऐड कर रहा है तो कितना आ रहा है सर? ये तो माइनस है, आई एम रियली सॉरी, ये माइनस है सर. दिस इज गिवन एज माइनस 75, दिस इज गिवन एज माइनस 75. तो कितना आ रहा है सर? ये how much is this? कैलकुलेटर ले लो रे. 230 minus 75, तो you are getting 155. यहां पे मिस्टेक हो सकता है सर, यहां पे मिस्टेक हो सकता है सर. क्या हो सकता है? he is asking internal energy. आप मिस्टेक मत करना. change in internal energy for 3-1. 3 is initial state, 1 is final state. So what is the change in internal energy for 3-1? It should be initial point is 3, final is 1. So it will be final minus initial. I don't want 3 minus 1. I want u1 minus u3. So therefore, what is u1 minus u3? u1 minus u3 is equal to minus 155. So net work is 40 and this is minus 155. Please बताइए, are we clear? तो आंसर क्या है सर? आंसर क्या है एक बार बोलो. अरे कहां गया रे? So therefore it is minus 155. B is the right answer. Is it clear, my dear students? Careful raho sir. Sometimes simple mistakes can cost you. The reason for giving this question is आप थोड़ा plus minus में there is a possibility of committing mistakes. Just to make you alert, I have given this question. Is it okay, sirs? Is it okay? Is it okay? कर सकते सर, आप mistakes कर सकते. Now, next question. Take this question. Please take this question. Please take this question. Wonderful, Lalit. Wonderful. You are right. Absolutely. Absolutely, you are right. Take the next question. Take the next question. पढ़ो एक बार. The slope of saturation pressure and saturation temperature, मतलब dp by dt, slope is dy by dx. So dp by dt is given as कितना दिया सर? 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये दिया है सर. The specific volume of saturated vapor is, I will write Vg, saturated vapor, I'll write it as Vg. How much is that specific volume? 0.0634 meter cube per kg. No problem at all. While the specific volume of liquid is negligible, what is he saying? Liquid specific volume is very small and it can be neglected. Leave it. Compared to that of vapor. Okay. The enthalpy of vaporization is using Clapeyron equation. Wait, sirs.
I have derived the Clapeyron equation as dp by dt is equal to, याद है सर कुछ? I have derived the equation as LH by T into Vg minus Vf. Hope you know this equation. Hope you know this equation. And today I am going to give you different varieties of these Clapeyron equations. Okay? तो ये हो गया सर. ध्यान से सुनो. And this temperature should be strictly in Kelvin. And clearly, किसको neglect कर सकते सर? Which term can we neglect? So liquid volume is very small compared to vapor. मतलब vapor के comparison में liquid is very small, so I can remove this. No problem at all. So now this equation can be written as, my dear students. So dp by dt is equal to LH by T into Vg. Excellent. Now how much is this value given, sirs? ये कितना वैल्यू दिया dp by dt? 50 kilonewton per meter square Kelvin. So this is 50 kilonewton per meter squared Kelvin is equal to latent heat. वो पूछा है by temperature should be in Kelvin. What is the temperature? It is 50 degrees centigrade. Add 273. 50 plus 273 is it 323, sir? Yes. Correct na? This is in Kelvin. Is it okay? Into Vg. What is Vg given? एक बार देखना. What is Vg given? 0.0634. 0.0634. एक बार units को check करना, sirs. Let me check the unit. So latent heat is equal to, if you want latent heat, you multiply all this. Unit के साथ लिखना, sir. Kilonewton per meter squared Kelvin into 323 Kelvin into 0.0634 meter cube per kg. Great. So Kelvin is gone. Meter square, 1 meter square is gone. So 1 meter is left. So kilonewton meter is kilojoule per kg. How much is the answer, sirs? Anyone? What is the answer? कितना आ रहा है सर ये? 1023.9. 1023. Units are very important. Kilojoule per kg. Let me check. 1023. Yes. DC. Is it okay? Next. Take this question. Please take this question. Take this question. थोड़ा फास्ट चलो. थोड़ा फास्ट चलो या दिस स्पीड इज ओके? थोड़ा फास्ट चलो या दिस स्पीड इज ओके? आप बताइए सर. Now, a piston rests at the bottom of the cylinder. ये अच्छा प्रॉब्लम है सर. This is it okay? सब ठीक है ना? Okay. Look at carefully. Please look at. Piston rests at the bottom of the cylinder shown in the figure. The piston weighs 100 Newton. So एक बार हम free body diagram बनाएंगे. ध्यान से सुनो सर. There is a piston here. क्या बोल रहे हैं आप? Speed is okay ना? A little fast. You want me to go fast or like slow? Fast चल रहा है तो slow करना. I think ये एग्जामिनेशन के लिए है सर. तो अगर हम स्लो जाएंगे तो आई कैन नॉट कवर ऑल क्वेश्चंस. ओके ना? सो फास्ट चलो. ओके, कोई बात नहीं. देखो, लुक एट केयरफुली. ऑलवेज रिमेंबर, फॉर वर्क द टर्म दैट इज एसोसिएटेड इज रेजिस्टेंस. फॉर वर्क द टर्म दैट इज एसोसिएटेड इज रेजिस्टेंस. नाउ आई विल आस्क यू व्हाट इज दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आई वांट टू लिफ्ट दिस पेपर. देखो, मैं इस पेपर को लिफ्ट कर रहा हूं and I want to lift this bottle. Definitely the work that I have done in lifting the bottle is more than the work that I have done in lifting the paper, because it is the resistance. To overcome that resistance I have to do work. अगर आप ध्यान से सुनना सर, sometimes system may not be giving information about the process. एक बार क्या होता है ना, system is not giving information about the process. When the system is not giving information, just go to surroundings. It will tell you, because it is a transfer. It is just a transfer. Because if I am giving you 100 rupees, for me it is minus 100, for others it is plus 100. So अब देखना सर, यहां पे बहुत केयरफुली देखना. देखो, actually the piston is resting at the bottom. Okay, this is the piston which is resting at the bottom, and it is supplied. There is a valve.
and there is air at 300 kilopascal, high pressure. Now there is atmospheric pressure. There is atmospheric. What is the atmospheric pressure given? 100 kilopascal. Great. The work done during the process is, can anyone tell what works are done here? I'll tell you two things. What are those? In displacing the atmospheric air and in lifting the piston, because piston का mass भी तो है. अगर piston massless होता है, if the piston is massless, then the work is only displacing atmospheric air. Let me repeat, sirs. यहाँ पे the work is done by this gas in raising the piston because it has a weight. There is a resistance that I have to overcome, and there is देखो, it's something like this. इधर देखना, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर भी है, पिस्टन भी है, तो पिस्टन को भी मूव करना है, एटमॉस्फेरिक एयर को भी मूव करना है. सो देयरफॉर टू वर्क्स वी हैव टू कैलकुलेट. वेरी गुड सर. एंड ऑब्वियसली एक बार देखना, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दिस, एनीवन, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक? 100 यूनिट किलो पास्कल. तो कैन आई राइट दिस एज किलो मींस 10 पावर 3, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बोलो सर, can I write this as the atmospheric force due to atmospheric pressure? But this is only pressure. I want force into area. On what area it is acting? It is this area. How much is the area given? यहाँ पे दिया है सर, कहीं पे दिया है 10 centimeter square. So therefore 10 centi का मतलब 10 power minus 2 whole square. Centimeter square. Centi means 10 power minus 2 whole square. तो कितना आ रहा है सर ये? Anyone कितना आ रहा है सर? Is it 100? ये तो मीटर स्क्वायर हो गया सर, ये कट गया. तो देखो एक बार, 10 पावर, ये तो 10 पावर 3 हो गया, 10 पावर 3 100 आ रहा है. सो देयरफॉर दिस 100 न्यूटन इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एंड इसका वेट भी है. हाउ मच इज द वेट? इट इज 100 न्यूटन. सो अब बताइए टोटल वेट कितना हो गया सर? 200 न्यूटन. एंड हाउ मच इज द वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है सर? ये टोटल फोर्स को, एटमॉस्फेरिक और वेट ऑफ द पिस्टन, एटमॉस्फेरिक दोनों को टोटल फोर्स इज 200. ये 200 को कितना मूव करना है? 200 को इट हैज टू मूव. सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रॉम मैकेनिक्स. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दैट फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो देखो समझ गया, अगर ये 200 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो मेरा गैस क्या करेगा? उतना ही फोर्स का. अब ये कंफ्यूज मत होना सर गैस का प्रेशर तो 300 है ना सर, व्हाई नॉट 300 इंटू समथिंग? अरे यार मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं उसको 200 रुपए दिया. सो व्हाट इज द ट्रांसफर? मेरे पास 5,000 रुपए, आई हैव 5,000 रुपीज, आई गेव 200 टू माई फ्रेंड. तो व्हाट इज द ट्रांसफर? इज इट 5,000 और 200? इट इज द 200. सो मेरे पास, सिस्टम के पास जितना है वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिनन. तो कितना क्रॉस हो रहा है बाउंड्री को वो मैटर करता है. यहां पे देयर इज रेजिंग ऑफ द, सो इसीलिए समटाइम्स, प्लीज लिसन केयरफुली, समटाइम्स सिस्टम इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन. तो कहां जाना चाहिए सर? यू शुड गो टू सराउंडिंग्स. सो देयरफॉर पिस्टन एंड एटमॉस्फेयर, ये सराउंडिंग्स को लिफ्ट करने के लिए. नाउ अब वर्क बोलो. सो अगर 200 ऐसा लग रहा है, माय गैस शुड अप्लाई 200 एंड लिफ्ट फोर्स ऑफ 200 into how much distance? This. So therefore 200 into so many Newton into 50 centimeter. 50 centimeter को मीटर में कन्वर्ट करना, I divide with this. So कितना होगा सर? ये कट जाएगा. I think this is 100 Newton meter is Joule. Is it correct? 100 Joule. But answer is given in kilojoule. Kilojoule, which is nothing but 0.1 kilojoule. Is it clear, sirs? Is it clear, sirs? Concept सीख लो सर. Concept 400 गलत है सर. नीतीश 400 गलत है. 200 into 0.5. It is moving through, it is displaced through 50 centimeter. क्या समझ में आ रहा है सर सभी को? Is it clear? Now, we'll move to the next question. Read this question. Please read this question. So, I have taken from all, मतलब यहाँ पे साइकिल्स आएंगे, रैंक एंड साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, एवरीथिंग विल कम. तो अब मजा आएगा सर. लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, इफ यू आर अटेंड रेगुलर कंटिन्यूअसली, अदरवाइज गो. देखो, ए कोल फायर्ड पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन रैंक साइकिल एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 30%. ओके, द हीट इनपुट टू द बॉयलर इज
500 megawatt. So what is the heat input or heat supply? I will write this as 500. Can I write megawatt as 10 power 3 kilowatt? Can I write 500? Mega means 10 power 6. उसको किलो में लिख रहा हूं. Okay. The power input to the pump is negligibly small. तो यहां पे pump work is 0. Negligibly small. तो 0 ले लेंगे. If the condenser is cooled by sea water of specific heat. अब आप बोलेंगे सर वाटर का स्पेसिफिक हीट तो 4.18 होता है. ये सी वाटर है सर, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, जो दिया है वो ले लो. तो इट इज 1.4. सी वाटर में साल्ट ज्यादा होता है, तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होता है हीट का, स्टोरेज कैपेसिटी. ओके, नाउ which is available at 20 degree, and if the exit measured exit temperature of the cooling water is 30, so water is entering at 20 degree centigrade and water is exiting at 30 degree centigrade. The mass flow rate of seawater required in condenser in kg per second is mass flow rate of water. पूछा है. इतना अच्छा क्वेश्चन है सर. इधर देखो सर, प्लीज लिसन केयरफुली. एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना. सर यहां पे पंप है, यहां पे बॉयलर है. बॉयलर में तो हीट सप्लाई होगा, एंड देयर इज अ टर्बाइन हियर एंड देयर इज अ कंडेंसर हियर. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टीम इज रिजेक्टिंग हीट इन अ कंडेंसर. This is heat rejected. So when the heat is rejected in condenser, who has to take? Our water has to take. Who is taking? Water is taking. तो देखो एक बार, water आ रहा है, heat ले रहा है. देखो ये heat, who is taking this heat? Who is taking this heat? Water. So water is entering at some temperature, and after absorbing this much heat, it is leaving at some temperature. He is asking what is the mass flow rate of water. तो कैसा करेंगे सर इसको? कैसा करेंगे सर? बहुत केयरफुली देखो, एक बार देखना. देखो, प्लीज लुक एट द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू फाइंड आउट इज व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड. तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट सप्लाई. इज इट करेक्ट? और एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज नेट वर्क बाय हीट सप्लाई. ओके, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू QS by QS is 1 minus QR by QS. How much is the efficiency given? एक बार चेक करना. What is the efficiency given? I think it is 0.3. Therefore, efficiency is 0.3 and that is equal to 1 minus rejection by supply. What is the heat supplied in the boiler? 500 into 10 power 3 kilowatt. 500 into 10 power 3 kilowatt means kilojoule per second. तो देखो यहां पे everything is known except heat rejection. Can you give me the value of heat rejection? Can anyone give me the value of heat rejection? No one is giving. Chao, मर जाओ sirs. No one is giving. So I got this as 35 into 10 power 4 kilojoule per second exactly. अब क्या करेंगे sirs? Now what I do? Now heat rejected is, देखो who is taking that heat? जितना heat reject हुआ, whatever the heat is rejected, that is taken by water. So that heat rejected must be MC delta T. So that heat rejected must be, I will write that heat rejected is equal to mass of water, specific heat of seawater into exit temperature of water minus inlet temperature of water, MC delta T. How much is the heat rejection? It is, एक बार देखो, what is the heat rejection? 35 into 10 power 4. 35 into 10 power 4 is equal to mass of water. Cool रहो आप. यहाँ पे sea water का specific heat is given. Don't take 4.18. Sea water specific heat is given as 1. So therefore 1. And what is the exit and inlet temperature? Just see. What is the exit temperature? 30. Inlet is 20. Exit and inlet is 30. And this is 10. Some students may be saying, sir, why are you not taking in Kelvin? Whenever it is difference, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree Celsius. एक बार यूनिट की तरफ देखना. इसका यूनिट है kilojoule per second. Clearly, it is given in kilowatt. How? Because it is known here. Because heat supply is given in kilowatt, so heat rejection will also be in kilowatt. Okay. Now, ये क्या होगा सर? kg per second.
specific heat is kilojoule per kg per Kelvin. And यहाँ पे whenever it is temperature difference, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree Celsius. तो ये गया, तो kilojoule per second tell it. तो you will get MW in kg per second. Calculate करके बोलना कितना आ रहा है सर? 35 into 10 power 4 by 35 into 10 power 4 by 20. How much is this? ये 10 है सर, ये 35 and this is 20. I'm sorry. ये value 20 है रे बाबा. This is 20. Wait. Simple things are always complicated. 30 minus 20 is 10. यहाँ पे 10 होना चाहिए. 10. Oh, this will be 35, 1, 2, 3. That is 35, ये 10 power 3 हो जाएगा kg per second. Correct ना? Is it correct, sirs? Wonderful, sirs. Wonderful students of India. 35 into 10 power 3. D is the right answer. Okay ना? और ये करो. Take this. Read this question. Fadafat. Please read the question. This is question number 8 na? Come on. This is also a good question. Shall I proceed, dear students? Okay. A stationary insulated rigid tank contains, there is a rigid tank and it is insulated. Contains 1 kg of ideal gas. कोई बात नहीं सर. 1 kg of ideal gas with constant specific heat. CV is given. Look at CV is given as 0.7 conventional units and CP is given as 1. At what is the temperature given? Kelvin में convert करना. Whenever it is ideal gas, Kelvin में convert करना. 27 degrees centigrade is 300 Kelvin. Okay. And the pressure is given as 300 kilopascal. Okay. A paddle wheel with a power input capacity of 20 watt is operated inside for 15 minutes. Okay. There is a paddle wheel and it is operated for 15 minutes. What is the power of paddle wheel? Anyone? What is the power of paddle wheel? 20 watt. Can I write watt as a joule per second? Yes, sir. Why not? Okay. And what is the final pressure in the tank? He is asking, what is the final pressure in the tank? Very good, sirs. Very good. Okay. Let me do this question, sirs. Now, dear students, paddle wheel work, is it work done by the system or on the system? Here, paddle wheel is rotating. It means this work is transferred to the system. So work is done on the system. So paddle wheel work is on the system. Our convention is on the system, we take it as negative. So therefore, our work is minus 20. Look at carefully. How much work is transferred to the system? It is in 1 second, 20 joule is transferred. But it is running for 15 minutes. So total work will be how much, sir? It will be minus 20 joule per second. It is for 1 second, but it is for 15 minute means 60 second. Let me repeat, sir. It is for 1 second. For 15 minute means 60 second. So I will get this work. So, कितना आ रहा है सर ये? मेरे पास पेन नंबर पर नहीं रे. आ गया. Is it okay? Is it okay? Wonderful, sirs. Wonderful. अब देखो. You know that D dash Q is equal to du plus d dash w. Wonderful, sirs. So it is insulated. So what is the heat transfer? 0. So internal energy change is du. And what is the work, sir? This much. It is minus 20 into 15 into 60. So कितना आ रहा है, sir?
20 into 15 into ये कितना आ रहा है सर? 18,000. Is it 18,000? Is it 18,000? Yes. So du is equal to unit की तरफ ध्यान देना ये सेकंड गया तो this will be in joule. So this will be in joule. So du is equal to 18,000 joule. Wonderful, sirs. But is he asking du? Is he asking du, sir? No. तो देखो फिर क्या करेंगे? du is equal to 18,000. इधर ये माइनस होगा, इधर देखो ये, look at carefully. ये अगर if you take it to this side, it will be plus. Okay, 18,000 joule. Okay, no problem. Can we write this as 18 kilojoule? Can we write this as 18 kilojoule? Yes. So for an ideal gas, du can be written as mcv dt. dt. For ideal gas, du can be written as mcv dt. So therefore, it is 18 kilojoule. Why I have converted in kilojoule? Do you know the reason? Because CV is given in kilojoule per kg Kelvin. Kilojoule should tally. So what is the mass given? कहीं पे कुछ mass दिया sir, 1 kg. No problem at all. The mass is given as 1 kg. And what is the value of CV given? CV, where is CV? It is 0.7. CV is given as 0.7 into T2 minus T1. And already T1 is 300. So from here, I get the value of T2. Can anyone give me the value of T2? कितना आ रहा है सर? 325.7 Kelvin. No problem at all. But now you tell me, is he asking T2? Is he asking T2? No one is telling. No. Is he asking T2? No. He is asking the final pressure. And please understand, my dear students. Please understand the question. It is a rigid tank. So what is the process? It is a rigid tank. What is the process? It is a constant volume process. So therefore, my dear students, PV is equal to MRT. Closed system mass is constant. R is a gas constant. Rigid container volume is constant. So pressure is directly proportional to temperature. So I will write this as P2 by P1 is equal to T2 by T1. What is P2? I do not know. And what is P1? Already the initial pressure is given. How much is the initial pressure, sirs? What is the initial pressure? 300 kilopascal. So it is 300 kilopascal. One more thing. If this is in kilopascal, this will also be in kilopascal. T2 is 325.7 and the initial temperature is 300. So this is gone. You will get the final temperature as 325.7 kilopascal. Is it correct, sirs? 325 point something aaya. Is it okay? Wonderful students of India. Chalo. Itne questions ho gaye, sir. Wow. We have not wasted any time. बहुत अच्छा लग रहा है सर. We have not wasted any time. Now take this question number 9. Let me try to include all varieties. Question number 9. Please read the question. Question number 9. You can calculate. Why not? You can calculate. So you know initial pressure, final pressure, initial temperature, final temperature. Not only entropy change, you can calculate entropy generation, you can calculate irreversibility. Yes, you can easily. There is no problem at all. Chalo, question le lo. An insulated rigid tank. Insulated rigid tank is divided into two compartments by a partition. This is the partition. One component contains how many moles, sir? 5 kilomole. Sometimes mole, kilomole में unit में problem होता है, sir, of oxygen. Very good. And the other compartment contains 5 kilomole. Very good. Of carbon dioxide. One more thing. Both are initially at 27 degrees centigrade and 200 kilopascal. Look at what is the temperature of both?
It is 300 Kelvin. 27 degrees centigrade means 300 Kelvin. So convert in Kelvin. And the pressure is 200 kilopascal. Very good, sirs. Now the partition is removed and the two gases are allowed to mix. The surrounding temperature is, what is the surrounding temperature? It is 300 Kelvin. And R bar universal gas constant is given. What is the exergy destruction? Means he is asking irreversibility. Exergy destruction मतलब कितना destroy हो गया, मतलब irreversibility पूछा है. कैसे करेंगे सर? Now it is a good question. Cool रहो आप. Are you ready? Someone said, sir, can we calculate entropy? वो तो छोड़ दो. You start here. अभी start करो. Okay, देखो एक बार. Look at sirs. Now इसको बोलते हैं actually diffusion. Mixing है. Diffusion कैसा है? What do you mean by that? What is the pressure of this? What is the pressure of this? Same. What is the temperature of this? Temperature of this? Same. Now you remove the partition, they mix. Now you may be wondering, sir, when the pressure temperatures are same, how they mix? Because of concentration gradient. इसका concentration अलग है, इसका अलग है. Because of concentration gradient, they mix. Now this is known as diffusion. Diffusion. So entropy change for diffusion is given by, look at carefully, minus N1 R bar ln x1 minus N2 R bar ln x2. Here x का मतलब mole fraction, not mass fraction. It is a mole fraction. ध्यान से सुनो सर, ध्यान से सुनो सर. इधर देखो. What is the meaning of x1? It is, ये फॉर्मूला है सर. ध्यान से सुनो सर. Number of moles of first by N1 plus N2. Similarly, x2 is equal to number of moles of 2 by N1 plus N2. थोड़ा आराम से सुनो. So what is x1? Each, दोनों में देखो, how many moles are there? 5. How many moles are there? 5. So I think each fraction is 0.5. 5 by 5 plus 5. यहाँ पे भी it is 5 by 5 plus 5. So you will get x1 as 0.5. You will get x2 as 0.5. Wonderful, sirs. No problem at all. Wonderful. Now, I will look at this. Can I calculate the entropy change? Yes. देखो, N1, 5. एक बार unit check करना, sir. N1 is given in kilomole. तो R bar का unit होता है kilojoule, 8.314 kilojoule per kilomole Kelvin. So sometimes you have to be very, very cautious, sir. Why you have to be very, very cautious? देखो देखो, sometimes why you have to be very, very cautious? The reason is, इधर देखो, kilo same can also be written as 8.314 kilo कट करेंगे तो you will get 8.314 joule per mole. अगर यहां पे मोल है तो यहां पे जूल होगा, अगर यहां पे किलो है तो किलो होगा. That you have to take care. So let me calculate, sir. N1 R bar is 8.314 ln x is mole fraction. What is that x1? It is 0.5 minus N2. What is N2? It is also 0.5. R bar is 8.314 and ln. What is x2, sirs? Mole fraction of second is also 0.5. Can you tell me what is the entropy change? Anyone in the class? Anyone? No one is telling. No one is telling, sirs. कितना आ रहा है, sir? No one is telling. No one is telling. No one is telling. No one is telling. ये वैल्यू कितना आ रहा है रे? How much is this value? Very sorry, sirs. अब बंद कर देंगे सर दुकान को. No one is giving. मतलब किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है. No one has calculator. 57.62 is correct. But you have to check the unit. You have to check the unit. This is kilomole 5. Unit check करेंगे. इसका कोई यूनिट नहीं है सर, ये तो वैल्यू है. N1 kilomole R bar kilojoule per kilomole Kelvin. Wonderful. Kilomole is gone. So you will get this as kilojoule per Kelvin. Wonderful, sirs. What is irreversibility? Anyone? What is irreversibility? T naught into, एक second please. What is irreversibility or exergy destruction? Irreversibility is T naught into entropy change of universe, or this can also be written as
T naught into entropy generation. Excellent, sirs. But whatever entropy change you have calculated only for system. Let me explain very clearly. जो भी आप calculate किए, whatever you have calculated for this system. But I have to calculate entropy change of universe. What is the entropy change of universe, sir? The entropy change of universe is entropy change of system plus entropy change of surroundings. You have just calculated for system. Now you tell me, what is the entropy change of surroundings? Anyone in the class? It is insulated. Whenever it is insulated, my system is not interacting with surroundings in the form of heat transfer. तो सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन ही नहीं हीट ट्रांसफर के फॉर्म में, सो देयरफॉर सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज इज जीरो इन एडियाबैटिक प्रोसेस. ये सब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर. तो इस केस में एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग बट इट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इटसेल्फ. सो देयरफॉर नाउ कितना है सर? अरे कहां गया रे? यस 57.62. What is the surrounding temperature, sir? What is the surrounding temperature? Surrounding temperature, it is 300. So therefore I will write irreversibility is nothing but T naught is 300 and this is 57 point कितना है sir? 57.62 unit kilojoule per Kelvin. This is Kelvin, this is Kelvin. Kelvin by Kelvin is gone. You will get it in kilojoule. But the answer is asked in megajoule. तो इसको 1000 से डिवाइड करना, you will get it in megajoule. कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? What is the answer? No one is involving. 17.2. Wonderful. Yes, this is the right answer. Is it okay? Is it okay? Next. Producers. Yes, in XC Carnot cycle is also there. Wonderful, sirs. Wonderful students. Wonderful students. एक बार देखो ये. The question is actually क्या कैलकुलेट करना समझ में नहीं आ रहा. तो यहां पे क्वेश्चन है the net work in kilojoule per kg is करो सर let me do this. Let me read the question. It is proposed that a solar powered engine will operate on Carnot cycle using ammonia as a working fluid. Heat addition is to occur at 50 degrees centigrade, transforming saturated liquid into saturated vapor. And the heat rejection is occurring at 20 degrees centigrade. Okay, let me draw Carnot cycle. देखो, at what temperature the heat supply is taking place? It is 50 degrees centigrade. This is supply of heat. And here there is a heat rejection. Now, heat rejection is taking place at what temperature, sir? कुछ दिया है. And heat rejection is occurring at 20 degrees centigrade. No problem at all. Now, cool रहो. क्या पूछा है सर? नेटवर्क. How do I calculate network? बोलो सर. How do I calculate network? देखो एक बार. Okay, no problem at all. No problem at all. देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर नेटवर्क? वेरी सिंपल. द क्लोज्ड एरिया को कैलकुलेट करो. सो कैन आई कॉल दिस? देखो, नेटवर्क इन ए साइकिल. डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ऑब्जर्व क्लियरली. कौन सा कलर ठीक है? एक बार ये ट्राई करेंगे सर, कोशिश करेंगे. कैन आई कॉल दिस एज नेट? कैन आई कॉल दिस एज नेटवर्क?
क्लोज एरिया, तो आप बोलेंगे सर इट इज अ टीएस डायग्राम. ऑन टीएस डायग्राम एरिया विल गिव मी हीट ट्रांसफर. यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Whenever it is a closed area, it will give me net heat. On TS diagram, the closed area will give net heat. But for a cycle from first law of thermodynamics, net heat is also equal to net work. So this closed area, actually it is giving me net heat because it is a TS diagram. But that net heat is also equal to net work. So therefore, I want this. तो कोई टेंशन नहीं सर. कैसे करेंगे? Just calculate the area. So net work is equal to area of rectangle. Net work is equal to area of rectangle. No problem at all. No problem at all. इधर देखो, इधर देखो. लेकिन what is the area? एक बार let me write this as delta S. मुझे ना डेल्टा एस पता नहीं है सर, कैसे करेंगे? वेरी वेरी सिंपल. यहां पे कूल रहो आप, मैं बताऊंगा आपको. देखो कुछ दिया है सर और कुछ दिया है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो क्या नहीं राइट, एक बार जस्ट फोकस ऑन 4 to 1 प्रोसेस. इज द एक सेकंड, कलर कौन सा ले लेंगे सर? कलर ये वाला भी सही नहीं है, ब्लू ठीक रहेगा. कलर थोड़ा चेंज करेंगे, ग्रीन कोशिश करेंगे. ग्रीन, ओके, देखते हैं सर. नाउ इज द एंथैल्पी हियर नोन? एक बार देखना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज HF. इसको मैं H4 लिखूंगा सर. At 50, this is the saturated liquid curve, it is a saturated vapor curve. So 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये HF है सर. This is HF. 50 डिग्री सेंटीग्रेड, at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो given that. So at 50 degree centigrade, Sg is given, and 20 degree centigrade, HF, Hg is given. Enthalpy value set. देखो, at 50 degree centigrade, HF is given, Hg is given. तो can I write HF is 421? इधर देखना. तो H4 is equal to, dear students, H4 is equal to at 50 degree centigrade. H4 is HF. तो HF कितना है सर? 421.5. Similarly, what is H1 sir? H1 क्या है बोलो? देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड Hg, Hg, Hg. तो what is Hg? At 50 डिग्री सेंटीग्रेड HF and Hg are given 1471.6. कोई प्रॉब्लम नहीं सर. मुझे बताओ सर, it is at a constant pressure process and you know what is the latent heat. What is the latent heat? It is H1 minus H4. What is the latent heat? H1 minus H4. So latent heat is nothing but amount of heat required to cause the phase change. So therefore latent heat is equal to, ध्यान से सुनो, कितना heat चाहिए to convert liquid to vapor? How much heat is required? It is H1 minus H4. H1 minus H4. H1 is 1471.6. अरे एक सेकंड रुको. Now 1471.6 minus 1471.6, H1 minus H4. So what is H4? 421.5. ये आ गया सर. Wonderful students of India. Wonderful students of India. ये आ गया सर. अब देखो. Now, sir, I want delta S. You know very well, whatever the heat is supplied, phase change is a reversible process. So जो भी heat supply कर रहा है, इसको project करना. तो ये एरिया, दिस कंप्लीट एरिया, ये वाला पूरा एरिया विल गिव मी हीट सप्लाई. ऑलरेडी हीट सप्लाई इज नोन. लेटेंट हीट इज हीट सप्लाई. इट इज इक्वल टू दिस एरिया. दिस एरिया का मतलब क्या हुआ सर? बट इट शुड बी इन केल्विन. 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 323 केल्विन इनटू, से ये जो लेटेंट हीट है, इट मींस दिस लेटेंट हीट, फेस चेंज हीट इज नथिंग बट this length into width. This length is, समझ में आ रहा है सर सभी को? All of you, are you following? All of you, are you following? समझ में आ रहा है सर? Please observe here. आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? Please बताइए. Is it clear? If you say yes, then I'll proceed. अगर आप yes बोलेंगे तो ही. Very good. Very good, very good. So therefore, ये आ गया सर. And what is this difference? What is this difference रे? 1471.6 minus 421.5.
कितना आ रहा है सर? 1050.1 and that should be equal to 323 into delta S, correct or not? That should be equal to this heat जो भी है, this vertical length is 323, this vertical length is 323 into delta S. 323 into delta S is the area and that area is giving me heat transfer. Now you tell me what is delta S, sir? What is delta S? मैं तो कैलकुलेट किया सर, यहाँ पे कितना आ रहा है? डेल्टा एस आ गया, कितना आ रहा है सर? नो वन इज गिविंग आंसर. डेल्टा एस कितना आ रहा है रे? सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1050.1 बाई 323. हाउ मच इज दिस? कोई भी नहीं दे रहा सर, ये गलत है, ये तो गलत है. 3.25 आ रहा है. यस इट इज 3.25. वंडरफुल. नाउ आई वांट, डियर स्टूडेंट्स, आई वांट network. This is the network. This is the network. This is the network. This is the network. How do I calculate this area of the rectangle? This area. So what is this area? Already delta S is known and this length is known. And whenever it is difference of temperature, it doesn't matter. अगर इसको भी केल्विन में, इसको भी केल्विन में रखो या फिर सेंटीग्रेड में रखो, फर्क नहीं आएगा. क्यों? Because it is difference. It is difference in temperature. It is difference in temperature. So therefore, convert this in Kelvin, convert this in Kelvin, take the difference, or don't take, you take in centigrade, doesn't matter because it is difference. तो कितना आएगा सर? 50 माइनस, ये कितना आएगा? 50 माइनस 20 इंटू, दिस इज नेटवर्क पूछा है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ. ये विड्थ कितना है सर? 3.25. इट इज 3.25. तो कितना आ रहा है सर? 30 इंटू 3.25. 30 इंटू 3.25. आई थिंक यू शुड गेट, कहाँ गया रे, कहाँ गया? 97.5 यूनिट किलोजूल पर, देखो समझ में आ गया ना? किलोजूल पर केजी नेटवर्क पूछा है, इन किलोजूल पर केजी इट इज 97.5. समझ में आया? बोलो सर, ये करो, रीड द क्वेश्चन. Please read the question. I'm back in one question. सब लोग विकास, अगर आपको लग रहा है टाइम पास तो बिल्कुल निकल जाओ सर, बिल्कुल निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. मुझे पता है आपको कौन भेजा है, उसको ही जाके बोलना
उसको ही जाके बोलना, उसका खुद का धंधा देखने के लिए बोलना, आपको जो भेजा है ना उसको जाके बोलना, ठीक है? राइट, समझ गए? समझ गए विकास? समझ गए ना? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जस्ट गेट लॉस्ट, क्योंकि आप देखे हैं सर, इन दिस 1.5 hours विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव सॉल्व 10 क्वालिटी क्वेश्चंस। समझ गए ना? यही होता है, क्योंकि पता चलेगा अगर मैं YouTube पे बहुत ज्यादा एक्टिव बन जाऊंगा तेरा धंधा बंद हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं सर मैं। इफ आई बिकम हाईली एक्टिव ऑन YouTube तेरा धंधा बंद हो जाएगा, माफ करना। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो सर क्या क्वेश्चन है सर, ए पर्सन विशेस टू डिटरमाइन द ह्यूमिडिटी, तो आप बोलेंगे सर ये ह्यूमिडिटी रेशियो तो नहीं है ना थर्मो में, साइक्रोमेट्री तो है सर, इन एक्सी पेपर साइक्रोमेट्री तो है ना? यस। देखो, ए पर्सन विशेस टू डिटरमाइन द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एयर एट हाई एल्टीट्यूड लोकेशन from the available data of relative humidity and variable temperature using psychrometric chart. However, by mistake, he uses the chart meant for sea level. वो क्या बोल रहा है? When I was teaching in your class, I told you that जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको एक ही बोला कि psychrometric chart is used. सर मेरा मूड खराब मत करना, अगर मेरा मूड खराब हुआ ना तो कंटिन्यूसली यूट्यूब पे आऊंगा, फिर धंधा मुश्किल होगा सर, ये भी बता रहा हूं, प्लीज प्लीज बता रहा हूं। तो ये मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो कोई जरूरी नहीं है आपका सर्टिफिकेट लेने का। समझ गए ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए। देखो, नाउ whenever a particular psychrometric chart is developed, it is for a particular pressure. ये एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए होता है सर। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट, क्या पूछा है सर वो, देखो एक बार क्या पूछा है, ही इज आस्किंग ह्यूमिडिटी रेशियो, मींस ही इज आस्किंग ओमेगा। देखो, कैन आई राइट ओमेगा एज 0.622 पीवी बाई पी टोटल माइनस पीवी। क्या हम लिख सकते हैं सर इसको? क्या हम लिख सकते हैं सर? क्या हम लिख सकते हैं सर? देखो, थोड़े लोग ना नाटक करने के लिए आते हैं, और मैं अभी आपको बताता हूं बुरा क्या है ना, यहां पे कुछ अच्छा हो रहा है तो मुश्किल होता है लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है सर, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो यही चलता है धंधा। ऐसा बोलना हमें नहीं आता है, हमें सिर्फ अपने काम से है। हेलो सर क्या हो रहा है, ये वीडियो बना के टाइम पास करना कभी आता नहीं। एक बार जाके मैकेनिकल फंडा का यूट्यूब वीडियो देखो, कितने क्वालिटी दिया मैं, और एक भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मेरा एक भी यूट्यूब पे कोई प्रमोशन ना कोई वेस्टेज ऑफ टाइम यू हैव नेवर सीन। एक बात बता रहा हूं सर, अगर हम सिंसियरली कंटिन्यूसली आएंगे ना, धंधा बंद हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं, जो भी आया है उसको जो भी भेजा है बता रहा हूं। लुक एट नाउ, देखो सर, इट इज एट सी लेवल, इट इज एट एल्टीट्यूड। आंसर सुनो, इट इज एट एल्टीट्यूड। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ही इज एट एल्टीट्यूड, एक आदमी एल्टीट्यूड पे गया, ओके गया, एक्चुअली कहां का प्रेशर लेना है सर? ही हैज टू टेक the total pressure should be at the altitude. ये जो भी एटमॉस्फेरिक है, it should be taken at the altitude. But वो मिस्टेकली क्या किया है? He has taken the total pressure of sea level. मतलब instead of taking actual pressure ये लेने का, वो sea level high altitude पे है, he is at altitude. Instead of taking the pressure at altitude, he mistakenly has taken this. आप बताइए सर, you know very well when you go to higher altitude what will happen to the pressure. जब आप higher altitude पे जाएंगे what will happen to the altitude pressure? Look at, उसको ये लेना था लेकिन वो ये लिया, मतलब वो क्या लिया सर? You know
व्हेन आई मूव टू हायर एल्टीट्यूड द प्रेशर डिक्रीजेस। जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो एक्चुअली उसको कम प्रेशर लेके करना था, मतलब एक्चुअली एल्टीट्यूड का प्रेशर लेना था। व्हाट विल बी द, लुक एट केयरफुली। तो इफ आई टेक एल्टीट्यूड प्रेशर, समझ में आया, ये प्रेशर लेना था मुझे। ये कौन सा प्रेशर लेना था? एल्टीट्यूड का प्रेशर, एल्टीट्यूड का। द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एल्टीट्यूड प्रेशर, एल्टीट्यूड प्रेशर इज लेस। जब ये लेस है तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा विल बी मोर एट एल्टीट्यूड, ओमेगा विल बी मोर एट एल्टीट्यूड बिकॉज द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। जब हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो ओमेगा ज्यादा होगा। लेकिन वो क्या किया? वो ये लिया, he has taken this। जब ये लेता है तो उसका ओमेगा क्या आएगा सर? इंस्टेड ऑफ टेकिंग एल्टीट्यूड he has taken सी लेवल, he has taken सी लेवल। अगर सी लेवल का लेता है तो वो ज्यादा लेगा, सी लेवल प्रेशर विल बी मोर। इंस्टेड ऑफ फॉर सिंपल एग्जांपल बताता हूं, लेट अस से दिस इज 101.3 किलो, 100 ही ले लेंगे सर इजी कैलकुलेशन के लिए। एल्टीट्यूड पे लेट अस टेक इट एज सम 90 किलो पास्कल। तो उसको कौन सा लेना था? he is at higher altitude, he should take 90। 90 जब लेता है तो डिनोमिनेटर कम होगा तो ओमेगा ज्यादा आता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी मोर। बट वो क्या क्या है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग 90 he has taken 100। जब 100 लेता है तो ये ज्यादा है, जब ये ज्यादा है तो ये क्या होगा सर? कम होगा। मतलब वो जो एस्टिमेट कर रहा है तो एक्चुअल से क्या आएगा सर? वो जो एस्टिमेट कर रहा है एक्चुअली इट इज मोर, बट वो जो एस्टिमेट कर रहा है ही इज एस्टिमेटिंग विद दिस वैल्यू। एक्चुअली उसको ये लेना 90 लेना था, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 90 ही इज टेकिंग 100। अगर वो 100 लेता है तो वो ज्यादा ले रहा है, डिनोमिनेटर में ज्यादा ले रहा है, तो उसका ओमेगा क्या होगा? कम आएगा। सो वॉट एवर द ओमेगा इज कैलकुलेटेड इट इज लेस। इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर सर? डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो बोलो। लेकिन सवाल यह है, देखो सवाल को देखो, देखो सवाल को देखो, द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट विल बी, वो जो डिटरमाइन किया इन्हें बोला द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट विल बी बोला। तो एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा सर? द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट, देखो कहां गया? अरे हाँ, व्हाट विल बी द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट? एक्चुअली ही शुड टेक 90, कम लेना है तो एक्चुअल क्या होना चाहिए? एनीवन? एक्चुअली ही शुड टेक लेस, तो कम। अगर ये डिनोमिनेटर कम है तो ये एक्चुअल वैल्यू शुड बी, नहीं आ रहा सर, एक्चुअल वैल्यू शुड बी मोर, नहीं आ रहे, नहीं आया आपको। देखो देखो कितने कैसे स्टूडेंट्स है, मैं दोबारा बताऊंगा सर, मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो what should be the actual value? What should be the actual value? I should take 90। जब 90 ले लूंगा तो क्या होगा सर? ये कम है, 90 का मतलब ये कम है, 100 से कम है, तो what will be omega more? तो actual value तभी आएगा when you take 90 and you will get the actual value when you take actual pressure which is 90। When you take 90 you will get actual omega, but you have not taken 90, you have taken 100। जब 100 लेंगे तो कम आएगा, जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो कम आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 90, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 90 यू आर टेकिंग 100। जब आप 100 लेंगे तो एक्चुअल से कम आएगा, तो एस्टिमेटेड वैल्यू विल बी लेस बट द एक्चुअल वैल्यू इज मोर। वो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। सो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? सो देखो एक बार, द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट विल बी मोर। यस और नो सर? अब आपको समझ में आया सर? अब आपको समझ में आया सर? बोलो रे। Is it okay? Very good। ये करो सर, टेक दिस क्वेश्चन, ये करो प्लीज, टेक दिस। लोग ना इतना नेगेटिव होते हैं कि अगर ये कंटिन्यूसली यूट्यूब पे आए तो हमारा क्या होगा, यही तो डर रहता है लोगों को। यू जस्ट टेल मी सर, डिड आई वेस्ट एनी टाइम? बिल्कुल नहीं सर। 2 kg ऑफ वाटर, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड है सर, इजी है लेकिन एक्सपेक्टेड है। 2 kg ऑफ वाटर ओके इज मिक्सड विथ, देखो मास इज 2 kg मिक्सड विथ 4 kg ऑफ वाटर ओके एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
What is the temperature here? देखो, ये 2 kg water is at 60 degrees centigrade and 4 kg water is at 30 degrees centigrade. Okay, in an insulated tank. Okay, fine. What is the entropy generated? तो कैसे करेंगे सर? How do we do this? There is 2 kg water and there is 4 kg water. This 2 kg water is at 60 degrees centigrade. 4 kg water is at 20 degrees centigrade. And you know very well, first let me calculate the final equilibrium temperature. When I remove the partition, they mix with each other. They mix with each other. So let the resultant final temperature be TF. दोनों का रिजल्टेंट टेम्परेचर टीएफ. तो एक काम करो, whenever you get questions on entropy, first you keep the temperature in Kelvin. जब भी आपको, ध्यान से सुनो सर, जब भी एंट्रोपी के क्वेश्चंस आता है तो टेम्परेचर केल्विन में पुट करो. आइडियल गैस के क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर केल्विन में पुट करो. सो व्हाट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड सर? दिस कैन बी रिटन एज, मेरे पास वैल्यूज है सर, फटाफट ले लेंगे. हाँ, व्हाट इज दिस? आई विल राइट दिस टेम्परेचर एज, इधर देखो 333, करेक्ट ना? और ये टेम्परेचर कितना है सर? व्हाट इज दिस टेम्परेचर? एनीवन? आई थिंक इज इट 303? यस सर, एक्सलेंट. अब देखो, and one thing is very clear sir, one thing is very clear, whatever the heat one is losing, the other is gaining, because it is insulated. जो heat lose कर रहा है, other is gaining, mc delta t. तो I will write this as heat lost, and obviously finally both will come to the same equilibrium temperature. तो ये दोनों mix कर रहे हैं, तो and please note down that it is insulated, तो whatever one is losing, other is gaining. तो heat lost by one fluid is equal to heat gained by other fluid. Very good. What is heat loss? mc delta t of, इसको हम मानेंगे first, इसको हम मानेंगे second. Let me take this as first, this let me take this as second. Should of first is equal to mc delta t of second. Wonderful, my dear students. दोनों के masses अलग है सर. Don't cancel this. लेकिन दोनों के स्पेसिफिक हीट सेम है, बिकॉज इट इज वाटर. तो आई कैन कैंसल दिस. तो व्हाट इज द मास ऑफ फर्स्ट? इट इज 20, सॉरी इट इज 2 kg लॉस्ट. इट इज लूजिंग फ्रॉम वेयर? इट इज लूजिंग फ्रॉम द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 333 टू अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ TF. सो व्हाट इज द लॉस? लॉस इट इज 3. देखो, मेरे पास इनिशियली 1000 रुपए है, बाद में 300 रुपए बच गए, तो लॉस कितना हुआ? 1000 minus 300 means loss is initial minus final, gain is final minus initial, loss is initial minus final. Initially it is 333 and final is TF should be equal to m. What is the mass of second? It is 4. And delta T, what is delta T? It is gain. It is gaining from where? It is gaining from 303 to a final temperature, because compared to 333 ये कम है, तो ये गेन करेगा तो बढ़ेगा, ये लूज करेगा तो कम होगा. तो व्हाट इज द गेन? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज TF minus 303. तो as these temperatures are in Kelvin, I will get TF also in Kelvin. Anyone with TF sir? Anyone with TF? कोई भी नहीं दे रहे सर, कोई भी नहीं दे रहे सर, कोई भी नहीं दे रहे सर. I am getting this as correct. Is it correct? Wonderful, students of India. Look at. देखो, please listen. This is insulated container. This is first system and this is second system. For the first system, the initial temperature is 333 Kelvin and the final temperature is 323 Kelvin. For the second system, the initial temperature is 313 and the final temperature is 323 because both are at the same temperature. So ये same लिखा सर, 313 correct ना? 303 333 303 333. This is 303 ना? एक second. 303. Is it correct, sirs? क्या ये करेक्ट है? इज इट करेक्ट? बोलो बोलो. वंडरफुल. एंड आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली. देखो एक बार, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द एंट्रोपी चेंज आई हैव डिराइव्ड सर
mcln T final by T initial, and these temperatures are in Kelvin. I have derived very clearly in class for solids and liquids, the entropy change is mc delta T. So let us calculate the entropy. Entropy is an extensive property. अगर आपको total extensive property चाहिए, you have to just add. For example, volume is an extensive property. Volume of this plus volume of this will be the total volume. So calculate the entropy change of first. Calculate the entropy change of second. So that will give me the total entropy change. This is first. Again, second is also water. For liquids and solids, the entropy change is given by, wonderful, my dear students. Ab dekho. So the entropy change is given by, what is the mass of first? पहले का mass कितना है sir? Anyone? What is the mass of first? 2 kg. देखो, 2 kg m. What is the specific heat? I think the specific heat is also given 4 point something, 4.18 exactly. देखो, 4.18 into ln. The first की बात कर रहे हैं sir. First का final temperature is 323 and first system का initial, oh कहाँ गया रे हाँ, first का final temperature is 323 and first का initial temperature is 333 plus second. What is the mass of second sir? What is the mass of second? दिया sir, कुछ दिया है sir. Mass of second is, मैं भूल गया. What is the mass of second? 4 kg. It is 4 kg. So 4, same fluid, so 4.18 ln. What is the final temperature of second? 323. Finally both are accepted. Initial temperature is 303. So 323 by 303. तो आप बताइए what is the entropy change? My dear students, कितना आ रहा है सर? So what is the final temperature, sirs? TF is 313, na? Okay. Okay. Final temperature is 313, na? Correct. Correct, correct. Final temperature is 313, na? Correct, correct. Correct. कितना आ रहा है सर? Anyone? What is the value? 25.1. Wonderful, sirs. Unit. इसमें कुछ है? एक्चुअली ये किस में आ रहा है सर? ये करेक्ट बोलो. हाँ, 0.0251 एग्जैक्टली 0.0251 आ रहा है. सो ये अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.0251 यूनिट की तरफ ध्यान देना. मास इज इन केजी, स्पेसिफिक हीट इज किलोजूल पर केजी केल्विन. दिस इज अ प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है तो केजी गया, किलोजूल पर केल्विन. दिस विल बी किलोजूल पर केल्विन, but that fellow is not asking in kilojoule per Kelvin, he is asking in joule per Kelvin. So 1000 से multiply करना तो joule में आएगा. So it is 20. Sirs, whenever it is fill in the blank question, you have to be very careful with units. तो joule per Kelvin में पूछा units, joule per Kelvin. So it is sorry, ये गलत है. It is 25.1. Is it correct? Is it correct? You are not saying anything. Yes, very good. आगे बढ़ते हैं सर. This 13th question I will do later. आप बोलेंगे क्यों later सर? Because reversed Brayton cycle is not included in XE syllabus. In XE syllabus RAC में सिर्फ vapor compression is there. लेकिन it is a conceptual question. मैं करूंगा. So right now हम सिर्फ एक ही छोड़ दिए अभी तक. कौन सा? 13th वाला. वो भी करेंगे सर. क्यों करेंगे? वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है. क्यों कॉन्सेप्चुअल के लिए? मतलब सिलेबस में नहीं है फिर भी क्यों कर रहे? बिकॉज हु नोस सिंपल थर्मोडायनेमिक साइकिल कैन बी गिवन एंड मे बी आस्क्ड. सो इसको बिल्कुल करेंगे सर. अच्छा क्वेश्चन है. अब देखो ये करो. बिल्कुल आई विल डू इट सर, डोंट वरी. देखो सर, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. अ वेरी 13th एक याद रखना. 13th हम नहीं करे.
आंसर दो 13 का, 13 का आंसर दो। क्वेश्चन विजिबल नहीं है? अच्छा, ओके। फॉर अ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, फॉर अ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, which of the following cycles are possible? For a simple vapor compression cycle, which of the following cycles are possible? Which of the following, ये VC साइकिल है, तो पूरा क्वेश्चन ही विजिबल नहीं है यार। अरे फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मेरे इसमें तो दिख रहा है सर। एक सेकेंड, क्वेश्चन दिख रहा है अब? अरे यार, ही हैज गिवन अ सिंपल वीसी साइकिल, विच वन इज पॉसिबल बोल रहा है। अब देखो सर, टीएस डायग्राम में आइसेंट्रोपिक, इट इज टीएस डायग्राम, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, थ्रॉटलिंग, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। क्या ये फर्स्ट वाला सही है सर? इज द फर्स्ट वन करेक्ट? इज द फर्स्ट वन करेक्ट? यस। नाउ पीएच डायग्राम देखो, पीएच डायग्राम, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, थ्रॉटलिंग। Throttling is isenthalpic, that's why it is vertical. On pH diagram, throttling is vertical. तो ये भी सही है सर। कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। देखो सर, क्या थ्रॉटलिंग ऐसे जाता है सर? क्या थ्रॉटलिंग ऐसे जाता है? सो ऑन टीएस डायग्राम इट इज रॉन्ग। क्या थ्रॉटलिंग पीएच डायग्राम पे, दिस इज पीएच डायग्राम, क्या थ्रॉटलिंग ऐसे जाता है सर? इन थ्रॉटलिंग एंथैल्पी इज कांस्टेंट, इट विल बी वर्टिकल। तो ये भी रॉन्ग है सर। तो ए एंड बी आर करेक्ट। इज इट करेक्ट? आंसर करो। आंसर करो। आंसर करो सर, आंसर करो प्लीज, आंसर। It is also MSQ. Answer. Are you ready? A, B, C. Okay. Come on. I have erased options. 1, 2, 3. Wah. For a given compression ratio, whenever the compression ratio is fixed, I have given two cases. Which cycle is efficient? Whenever the compression ratio is fixed, Otto cycle is efficient. मैं आपको कितने केसेस पढ़ाया था क्लास में, ऐसे इंजीनियर्स की क्लास में। For a given compression ratio, Otto cycle is efficient. देखो, for a given, I repeat, for a given compression ratio and inlet conditions, Otto cycle has high efficiency than diesel. It is correct. For a given maximum pressure and temperature, I have told you this also. For maximum temperature and pressure, which one is efficient? It is diesel cycle, sirs. It is diesel cycle. बताया था नहीं? For a given maximum pressure and temperature and the inlet conditions, diesel cycle has higher efficiency. This is also correct. The thermal efficiency of Otto cycle increases with increase in compression ratio. Higher the compression ratio, I have given you the graph also, something like this. So efficiency versus compression ratio. As the compression ratio is increasing, the efficiency is also increasing. ये भी सही है. For a given compression ratio and inlet conditions, the efficiency of diesel cycle increases with cutoff ratio. Oh my God. If you see the cutoff ratio versus efficiency, we have given a graph something like this. मैं graph ऐसा दिया. So as the cutoff ratio is increasing, the diesel cycle efficiency is decreasing. देखो,
For a given compression ratio and inlet conditions, the efficiency of diesel cycle increases with cutoff ratio. No, it decreases with cutoff ratio. This is wrong. So 1, 2, 3 are correct. So therefore, my dear students, एक बार check करना 1, 2, 3 are correct. If you just observe, now you give me the option. अब आप option बताइए sir. Give me the option. 1, 2, 3. B na? Is it B? Wonderful, sir. Wonderful, wonderful. So how can you increase the efficiency of a diesel cycle? Either by increasing compression ratio or by decreasing the cutoff ratio. Wonderful. Great. पढ़ो सर. हाँ, करो देखेंगे. करो देखेंगे. मैं नहीं छोड़ूंगा सर आज आपको. नहीं छोड़ूंगा. मैं भी जिद्दी हूं. चेक दिस प्लीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ए स्टीम बॉयलर 100 kg per second of water at 40 bar and 40 degrees centigrade, enthalpy and entropy is heated to a final temperature pressure of 673 Kelvin and 40 bar. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर. एक बार देखना. एक बार देखना सर. ट्राई करेंगे. कुछ आता है क्या आपको? हमें सीखना पड़ेगा ये सब. हमें सीखना पड़ेगा. लुक एट. सीख लिए क्या है इसमें. ओके. इन ए स्टीम बॉयलर 100 kg per second of water at 40 bar and 40 degree is heated. Okay, देखो. This is the inlet to the boiler and this is the exit from the boiler. Listen carefully. Now what will happen in boiler? Heat is supplied. Who is supplying that heat? I don't know. Someone is supplying. Someone is supplying the heat. कहीं से heat supply हो रहा है. So, ये source है. देखो क्या बोल रहा है सर? By using flue gases available at 750 means this temperature is 750 Kelvin. From this the heat is supplied to the boiler. इस टेम्परेचर से बॉयलर में हीट जा रहा है. सो 750 केल्विन से इस टेम्परेचर से हीट जा रहा है बॉयलर को. नाउ लुक एट. बोल क्या रहा है देखो सर. प्लीज लिसन. इन अ स्टीम बॉयलर 100 kg per second of liquid water. So what is the mass of water? It is 100 kilogram per second. आराम से सर, टेंशन मत लेना. At 40 bar. This is 40 bar. And at what temperature it is entering? 40 degree. And what is the enthalpy here? The enthalpy is given as 167. And what is the entropy? देखो entropy at 1 इस inlet पे 0.57. अच्छा प्रॉब्लम है सर ये. Kilojoule per kg Kelvin. Wonderful sir. Is heated to a final temperature and pressure of. The final temperature is 673 Kelvin. And the final pressure is, anyone? What is the final pressure? 40 bar. And what is the enthalpy, final enthalpy? The final enthalpy is given as 3213. Okay. And the final entropy is also given. How much is that? 6.77 kilojoule per kg per Kelvin. 6.7. Okay. By using flue gases available at this. So neglect kinetic and potential changes. The entropy generation in the process is. क्या क्वेश्चन है सर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लुक एट केयरफुली. लुक एट केयरफुली. लुक एट केयरफुली. आर यू रेडी? देखो सर, प्लीज लिसन केयरफुली. ओके, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Water is entering the boiler. From some source, heat is supplied, and steam is leaving the boiler. So if I take, my dear students, ये कलर लेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा. कलर को कुछ देखते हैं. ये वाला ये ले लेंगे सर. हाँ, लेट मी टेक
boiler as a system. अगर बॉयलर को सिस्टम मान रहे हैं तो ये क्या होगा? सराउंडिंग्स. वंडरफुल सर. ही इज आस्किंग एंट्रोपी जनरेशन. My dear students, the entropy generation is nothing but entropy change of universe. Correct now? Is it correct, sirs? So now I write the entropy generation is nothing but universe entropy is entropy change of system plus entropy change of surroundings. Okay. Here the system is boiler and surroundings are this. Look at sirs, carefully dekho. Can I, boiler is my system. Can I calculate the entropy change of system, sirs? Yes. Fully dekhna. Water is entering at this entropy and leaving at this entropy. So can I calculate the entropy change of the system, which is steam? Dekho, S2 minus S1. But you have to be very, very careful. Okay, no problem at all. और एक बात है सर, कुछ प्रॉब्लम है सर यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है. आराम से करेंगे सर, से अच्छा क्वेश्चन है सर. तो नाउ लेट मी कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम विच इज नथिंग बट इन द बॉयलर. तो at what entropy it is leaving? It is leaving at 6.77 and it is entering at 0.57. So therefore 6.77 minus point क्या है सर? 6.77 minus 0.57. Okay. Unit. It is kilojoule per kg per Kelvin. So I will get the entropy change of system. So how much is this sir? कितना आ रहा है सर ये? Is it 6.1? Values एक बार मैं चेक करता हूं सर. आराम से, no tension. कितना आ रहा है सर ये? Okay, no problem at all. यहां तक क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है? 6.2. ओके, इट इज, थैंक यू सर. 6.2 किलोजूल पर केजी पर केल्विन. बट द मास इज ऑल्सो गिवन. देखो हाउ मच मास इज गिवन? 100 kg per second. सो द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज, मास भी दिया है 100 ना? इज इट 100? इज इट 100 सर? इज इट 100? यस. सो देयरफॉर 6.2 kilojoule per kg per Kelvin. It is for 1 kg. Mass is 100. So therefore, you will get this in, correct? 100 kg per second or what? Unit देखो, 100 kg per second. No problem. So 100 kg per second. तो क्या आएगा सर? So the entropy change of system is equal to anyone? 6.2 into 100 is 620. Kilojoule per second is kilowatt per Kelvin. सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आ गया सर. नाउ सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज. कैन एनीवन टेल हाउ डू आई कैलकुलेट सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज? एनीवन? आई विल टेल यू सर. सराउंडिंग इज एक्टिंग लाइक अ रिजर्वायर एंड इस रिजर्वायर से आप हीट ले रहे हैं. तो फॉर अ रिजर्वायर इट इज Q by T. फॉर अ रिजर्वायर इट इज Q by T. तो Q, लेकिन इस रिजर्वायर का कैलकुलेट कर, यू आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस सराउंडिंग्स. लेकिन बॉयलर के लिए क्या है? ये सिस्टम के लिए प्लस है, हीट अंदर आ रहा है. इसके लिए क्या होगा? इफ दिस इज सराउंडिंग्स, फ्रॉम सराउंडिंग्स आई एम टेकिंग, तो फॉर दिस हीट विल बी नेगेटिव. सो देयरफॉर आई विल राइट दिस एज एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स विल बी इक्वल टू minus Q by T. What is that T? 750. This is Kelvin. Wait. Wonderful, sirs. No problem at all. Why have you taken this minus? Can anyone tell why this minus sign is taken? Because we are calculating for surroundings. अरे बॉयलर के लिए हीट प्लस है, लेकिन मुझे अगर सराउंडिंग्स का चाहिए तो सराउंडिंग से आप हीट ले रहे हैं, यू आर टेकिंग हीट, तो इसके लिए ये माइनस इससे जा रहा है. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस, इफ योर फोकस इज ऑन दिस, फॉर दिस इट इज गोइंग, सो इसके लिए ये माइनस है सर, माइनस है. बट नाउ आई डोंट नो क्यू. कैन एनीवन टेल हाउ टू कैलकुलेट क्यू? अरे यार, अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर बॉयलर. हीट सप्लाई इज चेंज इन एंथैल्पी. तो H2 minus H1, that is 3213 minus 167. So therefore, heat supply is equal to, in boiler, 3213 minus 167, and this is in kilojoule per kg. 1 second please. 167 and this is 3213.
but this is for 1 kg. But what is the mass? 100. So therefore, total heat supply will be 100 kg per second. ये 1 kg के लिए है. Mass is 100. 3213 minus 167. So many kilojoule per kg. तो ये kilojoule per second किस में आएगा सर? It will be in kilowatt. Can you tell me what is the total heat? Can you tell me what is the total heat? Anyone? 3046 00 kilowatt. Absolutely fine. So now can I calculate the entropy change of surroundings? Let me calculate the entropy change of surroundings. The entropy change of surroundings is minus Q by T. And this Q is, anyone? What is this Q? 304600. 304600 with a minus sign by 753. This is in kilowatt and this is in Kelvin. Let me check, sirs. एक बार ये किलोवाट में है और ये कितना है सर? Is it 753? Is it 753? ये वाला कितना है? 750. I'm sorry. 750. I'm sorry, sir. It is 750. Now, anyone with entropy change of surroundings? Anyone with entropy change of surroundings? सर कोई आंसर नहीं दे रहे सर, मुझे बुरा लग रहा है सर. नो वन इज गिविंग द आंसर. -4. थैंक यू सर. -406.13. So what is the entropy generation? It is entropy change of system plus entropy change of surroundings. So therefore entropy generation is equal to system. What is system entropy change? System 620 and surroundings -406.13. Both are in kilowatt per Kelvin. So you will get the entropy production or entropy generation. तो कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है सर total? Unit. No one is giving answers. है? Shibha Kumar Patra. Is it 0.5? No. I am getting this as 213 point. Yes, roughly 214. Unit kilowatt per Kelvin. कहाँ गया हूं? 214 kilowatt per Kelvin. So what is the irreversibility? T naught into entropy generation. ये कर सकते. अच्छा क्वेश्चन था ना सर? Is it not a good question? आप बोलो रे. Is it not a good question? कुछ नहीं बोलते सर साहब. Is it not a good question? फटाफट. Let's not waste time. कितने क्वेश्चंस हो गए सर? Go to the next. Please read the next. Read the next. Read the next. Come on. Constructively use कर रहे नहीं सर अपना टाइम. पढ़ो. अब आ गया ऑटो साइकिल का क्वेश्चन रे. अब आ गया ऑटो क्वेश्चन का. ओके नीतीश, गो. नो प्रॉब्लम. गो नीतीश. Please read this question. In an air standard Otto cycle, the working fluid may be assumed to be an ideal gas. The compression ratio is 7. Okay. So the compression ratio is given as 7. Okay. And the compression begins at 0.1 megapascal. Can I write this point? देखो, the initial pressure is 0.1 megapascal. So if I multiply megapascal with 100, what do I? 1000. If I multiply megapascal with 1000, I get it in kilopascal. 0.1 into 1000 is 100 kilopascal. No problem. And what is the initial temperature given? 35 degree. 273 plus 35 is 308 Kelvin. No problem. The maximum temperature in the cycle, let me write it as T3.
I'll tell you why I have written T3, why not T2. So it is 1100. So add 273, इसको 273 add करना, कितना होगा रे? 1373 Kelvin. It is the maximum temperature. 1, 2, okay. And properties of air, R is given, Cp is given, the net work output of the cycle is, okay, no problem at all. कर लेंगे sir, कर लेंगे? Wonderful students of India. Correct? Okay. Now please draw Otto cycle. Please, please draw Otto cycle. देखो Otto cycle. Is this correct, sirs? And what is P1 given? It is 100 kilopascal. And what is T1 given? So peak temperature, we are supplying heat here. That's why when the heat is supplied from 2 to 3, here the temperature will be maximum. So this T3 is given, and this is also given. What is T1? 308, 1373. 308, this is 308 Kelvin, and T3 is 1373 Kelvin. Is it correct? और क्या बोला है सर? Is it correct, sir? Question number क्या है ये? What is the question number? 17. Okay. और कुछ डेटा दिया सर? One more, something is given. Compression ratio is given as 7. और कुछ? नेटवर्क पूछा है सर. कैसे करेंगे सर इसको? देखो एक बार. The efficiency of Otto cycle is 1 minus 1 by R power gamma minus 1. So efficiency is given by 1 minus, the compression ratio is 7 and gamma is 1.4 minus 1. Please give me the value of efficiency because I have ready-made values. So मैं ले लूंगा sirs. I have ready-made values. So efficiency कितना आ रहा है? 0.5408. No problem at all. Now, can we write efficiency as net work by heat supply? Yes. So he is asking network in the problem, na? Is he asking network, sir? Yes, network. So already efficiency is known. Somehow if I can calculate heat supply, the problem is solved. But he is asking network in kilojoule per kg. What does it mean? तो वो kilojoule per kg में पूछा है, तो mass को 1 ले रहा है. So देखो sir, you tell me what is the heat supply? It is supplied at a constant volume. So as it is supplied at a constant volume heat transfer is change in internal energy. So therefore it is mCV delta T. So constant volume heat transfer is change in internal energy. mCV, because this air standard Otto cycle is taken as what? Considered as closed system. For closed system, heat transfer is change in internal energy. mCV, yahan se yahan, it is T3 minus T2. Absolutely fine. No problem at all. So I know CV as 0.718, mass is 1 kg, T3 is already given, T2 is not known. How do I calculate T2? आप देखना, 1 to 2 is reversible adiabatic. So can I write T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1? Yes, sir. So if you want T2, I will write it as T1 into V1 by V2 power gamma minus 1. But what is V1 by V2? Compression ratio R. इधर देखना. So T2 is equal to T1. What is T1? Already T1 is given 308. Already T1 is given. V1 by V2 is compression ratio, that is 7. Volume before compression and volume after compression, it is compression ratio. How much is this given? 7. And gamma is 1.4. So 1.4 minus 1. एक second. यहाँ से I'll get the value of T2. So T2 is T1 is 308. V1 by V2 is compression ratio 7. Gamma is 1.4 minus 1. Everything is known. I will calculate the value of T2. If I calculate the value of T2, कितना आ रहा है sir? Anyone? It is 670.8. Put it here. So the heat supply is mass is 1. CV is 0.718 into T3 is 1373 and T2 is already T3 is given and T2 is 670.8. So everything is known except heat supply. Can you tell me what is the heat supply, sir? It is 504.2. Once heat supply is known, I'll put everything here. So the efficiency is
0.5408 is equal to net work by heat supply. What is heat supply? 504.2. Is it correct? तो कितना आ रहा है सर? Is it correct? Correct. How much is this? 272.6. Is it correct? Very good, sir. 272.6. एक बार मैं चेक करता हूं. Very good. All varieties of questions we are doing. So it is 272 point something. Correct. Next. Take this question. Take this question. Come on. Very good. Keep your calculators ready, sirs. Keep your calculators ready. Next question. Come on. Read the question. Dear students, read the question. Let me read the question. Question number 18. In a steam power plant based on Rankine cycle, the turbine develops 12 kilowatt power. Okay. Now, assuming saturated liquid water at pump inlet, okay, density is given. What percentage of turbine output is required for condensate pump? The enthalpy and entropy values are given. Okay. पढ़ो सर, क्वेश्चन पढ़ो एक बार. क्वेश्चन दिख रहा है सर? Can you see the question? Can you see the question? Yes. Okay. Let me do this question. एक बार पढ़ लिए ना, मैं बताऊंगा सर. एक्चुअली डेटा नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा. आई विल राइट द डेटा ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, चलो इधर देखो. आई राइट द डेटा. द टर्बाइन पावर इज 12 megawatt. This can also be written as 12,000 kilowatt. Okay, no problem. And the density of water is given as 993 kilogram per meter cube. Okay. What percentage of turbine output is required for condensate pump? The enthalpy and entropy of saturated vapor at condenser pressure are. Okay, एक second रुको. First, let me show you the Rankine cycle. Simple ideal Rankine cycle. क्या बोला है वो? बस देखते हैं सर. आइडियल बोला है, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं सर. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. देखते हैं सर. देखो, क्या ये डायग्राम सही है या नहीं है मुझे पता नहीं है. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, क्या ये डायग्राम सही है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है सर. क्यों सर? क्योंकि राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ एंट्रोपी हियर एंड व्हाट इज द एंट्रोपी हियर. अगर ये एंट्रोपी अगर ये S1 SG से इक्वल होता है तो इट विल बी हियर. और एक बात सर, इधर देखो, ये भी हो सकता है सर. कैसे? अब देखो सर. लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. मैं विच वन इज करेक्ट आई डू नॉट नो सर. देखो सर, 4 to 1. अरे this 4 to 1 is occurring in boiler. This is in turbine. This is in condenser and this is the pump. क्लियरली क्या बोला है मैं बताता हूं. डेटा एक बार डेटा देखना.
डेटा देखना सर। द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट कंडेंसर प्रेशर, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर। The enthalpy and entropy of saturated vapor at condenser of saturated vapor, यहां का enthalpy is given and here the entropy is given. I repeat, sirs, at the condenser pressure, the enthalpy and entropy of saturated vapor. This is the condenser pressure. This is saturated liquid and this is saturated vapor. So at saturated vapor, he has given the enthalpy as 2573 and the entropy is given as 8.27. Great. Other data is given. Other data is also given. Look at और कुछ डेटा दिया। बॉयलर एग्जिट पे टेबल इज गिवन सर। ये सब डेटा मैं इस टेबल से ले रहा हूं सर। एक सेकंड, कहां गया वो? ये सब डेटा मैं टेबल से ले रहा हूं सर। ऑल दिस इज इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो डोंट वरी, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन आई राइट। एट द बॉयलर एग्जिट द एंथैल्पी इज, दिस इज द बॉयलर एग्जिट, दिस इज एंट्री टू द बॉयलर, heat is supplied and this is the boiler exit. At the boiler exit, the enthalpy is given as 3213 and the entropy at the boiler exit is given as 6.77. और कुछ दिया है सर? And pump inlet पे दिया है सर, pump inlet, तो H3 is given, pump का inlet, pump का exit, H3 is given 167 and entropy is given at pump inlet. पंप का इनलेट पे एंट्रोपी दिया है, पंप का इनलेट पे एंट्रोपी दिया है, कितना दिया है सर एंट्रोपी? इट इज 0.57. नाउ यू टेल मी सर्स, इतना अच्छा क्वेश्चन है सर, नाउ यू टेल मी सर्स, ये फिगर सही है या ये फिगर सही है? यू टेल मी, इज दिस फिगर क्लियर और करेक्ट? बोलो सर्स, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द एंट्रोपी एट 1? 6.77. So what will be the entropy at 2? It will also be 6.77. But this Sg is 8.27. मतलब the saturated vapor entropy here is 8 point something. So definitely ये entropy ज़्यादा है 8.27. And this entropy is S1 is S2 6.77. ये कम है इसलिए saturated से. So this figure is correct and this figure is wrong. So therefore I am erasing this, sirs. I am erasing this. Is it clear? नहीं आ रहा सर, किसी को समझ में नहीं आ रहा। इज इट करेक्ट सर? इज इट करेक्ट? सेकंड वाला करेक्ट है सर। सेकंड वाला करेक्ट है। अब पूछा क्या है, देखो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कैन आई एंड व्हाट इज दिस प्रेशर गिवन? द बॉयलर एंड कंडेंसर प्रेशर्स आर गिवन। देखो देखो, द प्रेशर्स आर गिवन। The boiler pressure is 40 and the pump inlet pressure is 0.073. देखो, this pressure is 0.073 bar and this pressure is 40 bar. Great, sirs. My question to you people is, it is an ideal Rankine cycle. So when I say ideal Rankine cycle, I assume the pumping process to be isentropic and I assume expansion in turbine to be isentropic. It is reversible adiabatic. Can I use the pump work as, can I calculate minus VDP, sirs? क्या मैं ये equation use कर सकता हूं सर? This can be used only when it is reversible. तो यहां पे ideal बोला है तो मैं reversible ले लूंगा. So is the pump work clear, sir? फर्स्ट केस इज राइट। व्हाट इज दिस सर? गलत है सर, गलत है सर। आप बोलो तो कैन आई यूज दिस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग पंपर? यू नो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, उल्टा करो, वॉल्यूम बाय मास इज 1 बाय डेंसिटी, बट व्हाट इज वॉल्यूम बाय मास? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1 बाय डेंसिटी। सो पंप वर्क कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ specific volume is 1 by density, specific volume is 1 by density into dp. dp का मतलब क्या है? बहुत केयरफुली देखना सर, चेंज इन प्रेशर P2 minus P1, हाँ एक सेकंड, P2 minus P1, ओके, चेंज इन प्रेशर।
तो 40 बार एक प्रेशर है, एक 40 बार है 0.073, बट दीज आर इन बार. वर्क शुड बी कैलकुलेटेड इन किलोजूल पर केजी. कैसे करेंगे सर? कीप दिस प्रेशर फ्रॉम बार टू किलो पास्कल. 1 बार इज 100 किलो पास्कल, 40 बार इज मल्टीप्लाई विथ 100, 0.073 बार इज मल्टीप्लाई विथ 100. तो अब देखो, पंप वर्क इज गिवन बाय, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूं सर. नेगेटिव का मतलब पंप वर्क इज ऑन द सिस्टम, वो तो पता है मुझे. इवन इफ आई टेक माइनस और डोंट टेक माइनस, देयर इज नो प्रॉब्लम. नेगेटिव मींस ऑन द सिस्टम. ओके, 1 बाय व्हाट इज द डेंसिटी गिवन? 993 into P2 40 minus P1 0.073, but these are in bar. Multiply with 100. When I multiply bar with 100, it will be kilopascal. Kilopascal means kilonewton per meter square. By there is density. ये 1 by density है, 993 is density, kg पर मीटर क्यूब. इधर देखो उल्टा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, 1 by नहीं. तो मीटर स्क्वायर मीटर क्या? किलो न्यूटन मीटर इज जूल, किलो जूल पर केजी. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पंप वर्क? एनीवन, व्हाट इज द पंप वर्क? एनीवन, व्हाट इज द पंप वर्क? कोई भी नहीं दे रहे सर. वेरी गुड, समवन हैज गिवन 4.021 किलो जूल पर केजी. वंडरफुल सर्स, वंडरफुल सर्स. पर केजी, पर केजी. यहां पे एक दिक्कत है सर, आपको कंफ्यूज करने के लिए. This work is given turbine work because you don't know mass flow rate. So pump work is calculated per kg. Turbine work should also be calculated per kg. What is turbine work? H1 minus H2. H1 minus H2. Already H1 is known. H2 is not known. How do I calculate H2? Dear students, S1 is equal to S2. देखो एक बार, यहां पे मैं ऐसा करता हूं सर, यही प्लेस चाहिए. Can I write S1 is equal to S2, sir? S1 is equal to S2, isentropic. But what is S2, sir? What is S2, sir? Anyone? What is S2? S2, it is in wet region. अगर वो wet region में है, तो it will be SF plus X into SG minus SF. It is in wet region. So it is in wet region. So SF plus X into SG minus SF. So S2, 6.77. S1, S2 is 6.77. SF. What is the meaning of SF? 2 point पे SF. SF का मतलब S3. SF का मतलब SF means S3. It is 0.57 plus X into SG. देखो S3 ये SG है. What is SG? 8.27 minus SF. What is SF, sir? S3. S3. It is 0.57. And I will get the value of X. मुझे ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया सर. कितना आया सर ड्राइनेस फ्रैक्शन? Anyone, what is the dryness fraction? Sir, no one is giving sirs. No one is giving sirs. What is the dryness fraction? Waiting. Aarti Sahni has given right answer 0.8052. Aarti has given correct answer 0.8052. Wonderful. So now can I calculate enthalpy at 2? Yes, why not? So H2, it is in wet region. It is HF plus X into HG minus HF. Excellent, sirs. H2 is equal to HF. What do we mean by HF? HF means H3. देखो at 2 HF means H3, it is 167 plus X is 0.8052 into HG. What do you mean by HG? HG 2573 minus HF. HF is already known. HF is H3. H3 is 167. So everything is known except H2. Can you give me the value of H2? Can you give me the value of H2? करेक्ट है ना? वेटिंग वेटिंग वेटिंग. इन्वॉल्व. Very good, very good. So can I calculate the turbine work? So the turbine work is H1 minus H2. So the turbine work is
H1. H1 is 3213. H2. What is H2? What is H2? 2104.3. Give me turbine work. This will be in kilojoule per kg. Dekho, please listen, sirs. If pump work is in kilojoule per kg, turbine work should also be in kilojoule per kg. Confuse करने के लिए ये value दिया है, sir. So, क्योंकि mass flow rate we can calculate. So, therefore, now he is asking, the question is, out of the total turbine work, what portion is consumed by pump? Both should be in, out of the total turbine work, what fraction is consumed by pump? Already we have calculated pump work. Kitna hai sir pump work? Anyone? It is 4 point, somewhere we have calculated. Pump work kahan gaya? 4.021. So 4.021 by turbine work. Just now you have calculated. What is turbine work? 1108.7. 1108.7. And if you want in percentage, he is asking in percentage, I think. Let me check. Is he asking in percentage? एक सेकंड देखते हैं. परसेंटेज देखो, परसेंटेज में पूछा है परसेंटेज ऑफ टरबाइन आउटपुट रिक्वायर्ड टू फॉर द कंडेंसेट पंप. पंप के लिए कितना फ्रैक्शन चाहिए? तो कितना आ रहा है सर? ये पॉइंट 0.32 0.36 correct. अगर 0.36 correct. Next. ये तो सिमिलर है सर डिफ्यूजन का. इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ डिफ्यूजन. आई एम लिविंग. शुड आई लीव? ये तो सिमिलर है सर, सिमिलर. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इधर देखो, -n1 r bar ln x1, where x1 is mole fraction, it is not mass fraction, -n2 r bar ln x2. He is asking the change in entropy. Number of moles are given, r bar is 8. ये तो कर लेंगे सर. Will you try? ये तो डायरेक्ट है सर, ये तो डायरेक्ट है. And the answer is 11.5. Please try this. Is it okay? कर लेंगे सर? Is it okay? Is it okay? कर लेंगे? नेक्स्ट आएगा सर. अब प्योर सब्सटेंसेस पे क्वेश्चंस आएंगे. प्लीज डू दिस. अभी आया मैं 1 मिनट. डू दिस. जस्ट कंप्लीट दिस.
ratio is missing. The ratio of stroke volume to clearance, यहां से लिख रहा हूं सर, to clearance is 9. Then heat added in kilojoule per kg is, करो, in an ideal air standard Otto cycle, the pressure and temperature at the beginning of compression, 101, and the temperature is 273 plus 27 is 300 Kelvin. The ratio of stroke volume to the clearance volume is 9. The ratio of stroke volume to the clearance volume is 9. And gamma is 1.4. CV is given. The maximum temperature in the cycle is, he is asking. So which temperature is asked in the question? Maximum means T3. Maximum means T3. Okay. यहाँ ले लेंगे sir. Let me draw the cycle. Let me draw the cycle. Don't worry. Let me draw the cycle. Okay, let me write the data. P1 is given as 101 kilopascal and T1 is given as 300 Kelvin, and the stroke volume to the clearance volume is given as 9, and and the heat supplied, एक second. He is asking, नहीं, question ये नहीं, एक second, question ये नहीं. Heat added is, wait sirs, wait. Heat added is 1800 kilojoule per kg. Then find the maximum temperature. Heat added is 1800 kilojoule per kg. Find the maximum temperature. Heat added दिया है. Heat added is given and is asking the maximum temperature. Okay, right. I think he is asking yes. देखते हैं सर, देखो. And how much is the heat supply given? Heat supply कितना दिया? 1800 kilojoule per kg. No problem at all. Great. Now, how do I do this? बहुत carefully देखना. And और एक बात है सर यहाँ पे, हाँ है, the maximum temperature in degree centigrade. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. The maximum temperature in degree centigrade. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, no problem at all. Wait. It is per kg. No. क्या करे सर? हाँ. The compression ratio can be written as 1 plus Vs by Vc. ये सब derivation किया था सर क्लास में. All these derivations are made in the class. So therefore, the compression ratio is given by 1 plus, what is Vs by Vc? Vs by Vc is 9. So the compression ratio is 10. No problem at all. Now, dear students, he is asking maximum temperature. तो मुझे बताओ सर, what is the equation for heat supply? It is M. Actually, it is a constant volume process. So the supply is taking place at constant volume. For constant volume, the heat transfer is change in internal energy. But change in internal energy is mCV delta 3. Therefore, 2 से 3 जा रहा है. So it will be T3 minus T2. Okay. So heat supply is already given. देखो sirs, heat supply is already given. एक second. Already given. कितना दिया sir? It is 1800. And mass per kg बोला है. It is per kg, means mass is 1. And CV is also given, I suppose, if I'm not wrong. CV is given as 0.718.
So 0.718 into T3 minus T2. Dear students, I want maximum temperature T3, but to calculate T3, I want T2. How do I get T2? आप बताइए. Very simple, sir. What is 1 to 2 process? It is reversible adiabatic. So T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. So T2 is equal to T1 into V1 by V2 gamma minus 1. So T2 is equal to T1. All are in Kelvin. What is T1? 300. What is V1 by V2? It is compression ratio. How much is that? 10. And gamma is 1.4 minus 1. Can you give me the value of T2? क्या कोई T2 का वैल्यू दे सकते सर? क्वेश्चन नंबर 20 ना. Anyone with T2? T2 753.56 I think. All are in Kelvin. Is it correct? Is it correct, sir? Is it correct? Wonderful. अच्छे स्टूडेंट्स है सर, आप अच्छे आंसर दे रहे हैं. तो यहां पुट करना सर एवरीथिंग. So it is 1800 is equal to 0.718 into T3 minus T2. That is 753.56. So everything is known except T3. How much is T3? I think you are getting T3 as 3260.5. Will it be in Kelvin or degree centigrade? Already you know all these temperatures are in Kelvin. So this will also be in Kelvin. So is this the right answer, sirs? Is this the right answer, sirs? No, sirs. No, sirs. No, sirs. I want this in centigrade. So minus 273 karna, sir. You subtract 273 from this. You subtract 273 from this. 3260.5 minus 273. So kitna aa raha hai? 2987. So this is 2987 degree centigrade. Hey? 2987. Yes, it is correct. Is it okay? Is this okay? Bolo, bolo, bolo. Correct. Next. मैं ऑर्डर में नहीं लूंगा सर. ऑर्डर में नहीं लूंगा. तो कितने क्वेश्चंस के ऑर्डर में नहीं लूंगा ये करेंगे. कुछ विल डू वन थिंग. कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लेंगे. Take this. Read this question. Take this. Read this question. अच्छा क्वेश्चन है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. A sealed again rigid vessel having a volume of 2 meter cube contains saturated mixture of liquid vapor of refrigerant at 10 degree. Okay. The vessel is now heated to 50 degree and the process stops when the liquid vapor, when the liquid phase just disappears. Okay, no problem. No problem. So all these values are given and the question is, what is the initial mass of the liquid? Let me explain the question. Initial temperature 10, final temperature 50. Rigid vessel. So what process are you expecting, sirs? It is a rigid vessel. What process are you expecting? Bolo, bolo, bolo. No one is commenting. No one is commenting. No one is commenting. Constant volume. देखो. वो कह रहा है. See, what is the question, sirs? It's a good question. Let me explain the question first. First, understand the question. The final state, देखो, initially there was it is a rigid container. In this container,
there is a liquid refrigerant and there is a vapor refrigerant. Initially, this system is at 10 degrees centigrade. Now heat is supplied. How long the heat is supplied? All the liquid is converted into vapor. Apura, it is vapor. It's all saturated vapor. He's used the word, idhar dekho. He used the word, look at, the process stops when liquid phase just disappears. Liquid phase just disappears. Okay, no problem. Now, so what does it mean? Finally, it is whatever the liquid was there, you have heated, all it got converted into vapor. Just disappeared. तो क्या ये सही है सर प्रोसेस? Is it correct? So finally, there is no liquid. It is a saturated vapor. Finally, there is no vapor. Sorry, liquid. Finally, there is no liquid. Only vapor. Only vapor. तो प्रोसेस तो कांस्टेंट वॉल्यूम का है सर. कैसे पता आपको? रिजिड कंटेनर. तो ये पूछ रहा है इनिशियली कितना मास ऑफ लिक्विड था. Initially, what was the mass of liquid? This is the question. Data पूरा दिया है सर. Data is given, so no problem. Let's take the data. एक सेकंड रुको. What is the volume of the container given? It is 2 meter cube. Is the volume changing, sir? ध्यान से सुनो. Is the total mass and total volume changing? आप बताइए सर. Is the total mass? देखो, is the total mass and total volume changing? No. May it be liquid, may it be vapor. Liquid हो या vapor हो, total तो constant है और total volume भी constant है सर. So कोई टेंशन नहीं है सर. इधर देखो. Can I say the specific volume here and specific volume here are same? You may be wondering. Specific volume is volume by mass. Total volume of the container by total mass. So it is a closed container, so total mass to change nahi ho raha. Whether you are moving from 1 to 2, whatever it may be, the mass is same and volume, it is a rigid container, volume is same. So throughout the process, the specific volume is same. Wonderful, sirs. From the table, yahan pe table mein, yahan ka specific volume diya gaya hai, sir. Let me explain. At 50 degrees centigrade, kaha hai question? At 50 degrees centigrade, the specific volume is given. यहाँ का specific volume is given at 50 degrees centigrade. The specific volume is given 0.015. Great. So if the specific volume at 2 is 0.015, what will be the specific volume at 1? It will be same because it is a constant volume process. But 1 is in wet region. So can I write 1 as Vf plus x into Vg minus Vf? लिख सकता हूं या नहीं? Because 1 is in wet region. So look at carefully. But V1 or V2, the specific volume is same. So here 2 specific volume is given. So therefore, V1, V2 is same. 0.015 is equal to. And at 10 degrees centigrade, Vf and Vg are given in the table. At 10 degrees centigrade, इसका Vf और Vg दिया है. मैं बताता हूं सर. So at 10 degrees centigrade, Vf is given as 0.0008 दिया है सर. 008 plus x into Vg minus Vf. So Vg is given as 0.05 and Vf is 0.0008. So everything is known. Can I calculate the initial dryness fraction? क्या मैं initial dryness fraction calculate कर सकता हूं? Everything is known. Please give me the value of x. कहां गया रे? x का वैल्यू बताओ. x का वैल्यू, I think you are getting the value of x as 0.2886. Everything is known. Now, is it correct, sirs? Is it correct? Yes, yes, wonderful students. But what is the meaning of x? X is nothing but it is the mass of vapor to the mass of vapor plus mass of liquid. Can I write this mv plus ml as total mass? Can I write mv plus ml as total mass? And clearly it is given in the problem. The total mass is given, I suppose, if I am not wrong. The total नहीं दिया है? दिया है या नहीं दिया है? कैलकुलेट करेंगे सर. टोटल मास कैलकुलेट करेंगे. उसमें क्या टेंशन है? Specific volume is volume by mass. Mass is equal to volume by specific volume.
देखो मास, ये कौन सा मास आएगा सर? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर है. इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, इट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो दिस विल गिव मी द टोटल मास. तो टोटल मास क्या है? वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम. व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन? 2. What is the volume? And what is the specific volume? Already you know the specific volume. Already you know the specific volume. It is 0.015. Can you give me the total mass? Can you give me the total mass? No one is giving. No one is giving. Can you give me the total mass? Wonderful, sirs. 133.3 kg. Wonderful. This total mass is 133. ध्यान से सुनो सर. This total mass is 133 क्योंकि complete mixture का specific volume is known. Complete mixture का volume is known. So complete mixture volume, complete mixture specific volume is known. So complete mass of the mixture is known. 133. Now, can I calculate? So what is the dryness fraction? यहाँ पे मिल गया सर. So देखो, dryness fraction is equal to X is equal to mv by mv plus ml. So dryness fraction is equal to mv by, and this can be written as m, which is nothing but ये पूरा total mass है. So what is x? Already you know the value of x. How much is x, sir? How much is x? कितना है? 0.2886. So this is 0.2886 is mass of vapor by total mass is 133.3. You give me the mass of vapor. Initial mass of vapor, sirs. Initial mass of vapor. ये इनिशियल ड्रेनेज फ्रैक्शन है. इनिशियल मास ऑफ वेपर कितना आ रहा है सर? इनिशियल मास ऑफ वेपर, एनीवन? व्हाट इज द इनिशियल मास ऑफ वेपर? 38.47 kg. इज इट करेक्ट? बिल्कुल गलत. ही इज नॉट आस्किंग इनिशियल मास ऑफ लिक्विड पूछा है. ही हैज नॉट आस्क्ड वेपर. बट वॉट एवर वी हैव कैलकुलेटेड, it is for vapor. It is for vapor. So mv plus ml, यही तो problem है sir. The total mass is 133.3. If you want mass of liquid, it will be 133.3 minus mv. So mass of liquid will be equal to 133.3 minus mv. What is mv? 38.4. So how much is mass of liquid, sir? How much is mass of liquid? वही तो है sir. Be careful. 94.8. Be careful. He has initial mass of the liquid 94.8. Is it correct? आ रहा है सर? आ रहा है सर? और एक अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे सर. You tell me, are the questions correct? Okay? पढ़ो. Very good. No, 38 point something is wrong. It is mass of vapor. He is asking mass of liquid. Be careful, be careful. Come on. Come on, come on. Next. ये पढ़ो. Simple question है सर. बीच बीच में simple, बीच बीच में tough. When moist air is cooled sensibly in a cooling coil, is it correct, sir? Sensible cooling means omega is constant. When a moist air is cooled sensibly, what is happening to the wet bulb temperature and what is happening to the what I say relative humidity? इधर देखना. Can I say this is the wet bulb temperature? These are wet bulb temperature lines. This is the wet bulb at 1 and this is the wet bulb at 2. देखो, जब आप कूल कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है सर. जब कूल कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है. So this is the wet bulb temperature at 1. This is the wet bulb temperature at 2. So you are decreasing the wet bulb temperature. So can I say that the wet bulb temperature is decreasing? Can I say the wet bulb temperature is decreasing? बोलो रे. You are not giving any answer, sir. Can I say the wet bulb temperature is decreasing? Yes, it is decreasing. How about relative humidity? How about relative humidity? इधर देखो. This is one relative humidity. This is another relative humidity. So this is phi 1. This is phi 1. एक second please. एक second please.
सर मैं क्लास में हूँ सर, सर क्लास में है सर। ओके ओके, 1 second प्लीज। राइट, एंड what is happening to the relative humidity? देखो, this is one relative humidity phi1 and this is another relative humidity phi2। ये phi1 phi2 क्या हो रहा है सर? जब आप इस तरफ जा रहे हैं means you are moving towards saturation। So when you are moving towards saturation, look at, when you are moving towards saturation, relative humidity is increasing, so definitely phi2 is greater than phi1, so relative humidity is increasing, correct ना? So relative humidity, देखो, we are moving towards saturation, relative humidity is increasing and wet bulb temperature is decreasing। wet bulb decreases, relative humidity increases। कहां गया वो? wet bulb decreases, relative humidity increases। is the option 2 correct? Is the option 2 correct? Okay, wonderful। next, wonderful students, wonderful। मतलब सारे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं सर। करो, पढ़ो सर, प्लीज रीड द क्वेश्चन। The net entropy change at the end of the process undergone by the closed system is 0। above processes, आंसर दीजिए सर। चेक करता हूं सर, उसको कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, मैं देखता हूं सर। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करो। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, मस्ट 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 मे। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, every word is important, look at carefully। the entropy change is 0 बोला है, there is a process, entropy change is 0। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, look at carefully। now there is a system, there is a friction, मान लो यहां पे फ्रिक्शन है, तो डेफिनेटली ये इरिवर्सिबल है। you know my dear students, ds is equal to d dash q by t plus del s generation। एटलीस्ट यू नो दिस ना। मान लो ये इरिवर्सिबल है, मान लो ये इरिवर्सिबल है, तो whenever it is irreversible, definitely my dear students, whenever it is irreversible, entropy generation will be there and it will be always positive। मान लो my system is losing heat, imagine, अरे possibility बता रहा हूं रे, possibility बता रहा हूं, when I am compressing this, because the temperature is increasing, so it is losing heat and there is a huge friction, so therefore it is irreversible। देखो एक बार carefully देखो सर, carefully देखो। so this value, my system is losing heat, so when the system is losing heat, this heat is losing heat, तो negative, so this term will be negative। wonderful sir, wonderful। मान लो this value is 3, मान लो, और ये value is 3, what is ds? 0। एंट्रोपी चेंज इज 0, बट क्या ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है सर? वो क्या बोल रहा है, मस्ट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्या एंट्रोपी चेंज होने से रिवर्सिबल एडियाबैटिक होना जरूरी है? इफ द एंट्रोपी चेंज इज 0, शुड इट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक? हियर द एंट्रोपी चेंज इज 0, बट इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज नॉट एडियाबैटिक। तो मस्ट बोल रहा है, ये गलत है। मस्ट बी बोल रहा है, तो ये गलत है सर, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट शुड नॉट बी मस्ट, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, you should be very very careful। is it okay? what disturbs is must, it must be reversible। क्या ये रिवर्सिबल है? entropy change is 0, but it is not reversible। it must be reversible adiabatic। entropy change is 0, but it is not reversible, it's not adiabatic, this is also wrong। must be irreversible and adiabatic। क्या adiabatic है सर? irreversible है, but is it adiabatic? irreversible है, is it adiabatic? ये भी नहीं। may be irreversible, yes it may be irreversible involving heat transfer, हो सकता है, may बोला है, may, so therefore D is the right answer। have you followed sirs? अभी नहीं है सर, अभी नहीं है, you have not understood।
Is it clear, my dear students? Is beautiful question, sir. Ye. So what is, it's a beautiful question, sirs. Clear or not clear? Clear or not clear? Got it na? Got it na? Very good, very good. Next. आप महान है रे बेटा, आप महान है. Take this question. Next question. Next question. Take this question. Take this question. Next question. आप महान है रे बेटा, आप महान है. समझ गए? आपको प्रणाम, आप बहुत बड़े आदमी हैं. Go to the next question. Proceed, proceed, proceed. आराम से. Read the question, next question. I said read the next question. ये भी अच्छा है सर. Read the next question. Ready है? Ready है? Nitrogen gas is stored in a cylinder of 5 liter volume. Okay. The volume is given as 5 liter. मतलब 1 liter is 10 power minus 3 meter cube. 5 liter is 5 into 10 power minus 3. Okay, no problem. And the pressure is 200. Temperature is 27 degrees centigrade. Okay. The pressure is 200. Unit देखेंगे सर एक बार. Unit देखेंगे. Pressure is 200 bar and temperature is 27 degrees centigrade. 27 degrees centigrade can be written as 300 Kelvin. So this pressure can also be written as 1 bar is 100 kilopascal. So therefore it is so many kilopascal. Is it correct or wrong? Is it correct? 1 bar is 100. तो ये हो गया सर. No problem at all. Now, the compressibility factor of a compressibility factor of 1.5 for nitrogen may be assumed. The compressibility factor is given as 1.5. Okay, no problem. It is given as 1.5. And the gas constant for nitrogen is 0.297. So the value of R for nitrogen or ammonia? Nitrogen is 0.297. It is 0.297. What is he asking, sirs? What is he asking? Okay, the actual mass of nitrogen in the cylinder is approximately. With respect to ideal gas, what is the change? ये अच्छा question है, sir. Okay? Okay. Now, देखो, please listen. Dear students, एक बार देखना, sirs. PV by MRT is known as compressibility factor. It can be greater than 1, it can be equal to 1, it can be less than 1. Okay, no problem at all. Now, look at carefully. This is the actual. This is the actual. And now, what is the compressibility factor for ideal gas? ये actual है, sir. Let's take actual. Actual value of Z is 1.1. Ideal gas के लिए, what is the compressibility factor? You know, ideal gas is PV is equal to MRT, or PV by MRT is equal to 1, correct na? So, but PV by MRT is Z. So, for ideal gas, compressibility factor is 1. For ideal gas, the compressibility factor is 1. एक सेकंड रुको जरा, रुको. तो एक काम करते हैं सर, M is equal to, you take M to this side,
पीवी बाई आर टी। सो अगर आप ये यूज करेंगे, ये किसके रेस्पेक्ट से आएगा सर? ये जो मास आ रहा है, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस। सो वेन एवर यू टेक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एज 1 और m को उधर लेना पीवी बाई आर टी। चलो आइडियल गैस यूज करते, लेट्स कैलकुलेट द मास, व्हाट इज द प्रेशर। वन मोर थिंग, whenever r is in kilojoule per kg kelvin, p should be in kilopascal. What is r? It is in kilojoule per kg kelvin. Okay, प्रेशर कितना दिया सर? 2 into 2, ये देखो 1 2 3 4, 2 into 10 power 4, and the volume is given as 5 into 10 power minus 3, and r is 0.297, and the temperature is, what is the temperature? 300. Can you give me the value of ideal gas mass? Anyone? तो ये आइडियल गैस के साथ कितना आ रहा है सर मास विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस? 40th क्वेश्चन। आइडियल कितना आ रहा है सर? 1.122। कैन आई राइट इट एज 1122 ग्राम? अरे यार ये आइडियल क्या है? कैन आई राइट इट एज 1122 ग्राम? कैन आई राइट इट एज 1122 ग्राम? Now, let's use actual. ये actual है, देखो, can we write m actual as, because compressibility factor is given, PV by m को उधर लेना और z को इधर लाना. So when I take m z here, PV by zRT. Okay, let's calculate the actual mass. तो कितना आ रहा है सर? P. What is the pressure? 2 into 10 power 4. And what is the volume? Volume is 5 into 10 power minus 3 by Z. Z is given as 1.1, R is 0.297, and temperature is 300. Can you give me the value of actual mass? Anyone in the class? कितना आ रहा है सर ये actual mass? Actual. Very good. Or this can also be written as 1020 gram. तो actual कितना आ रहा है? What is the difference? कितना आ रहा है सर? Difference is 102 gram. Difference 102 gram. So actual mass is 102 gram less than the ideal mass. What is the difference, sir? What is the difference? 1122 ideal के रेस्पेक्ट से, आइडियल के रेस्पेक्ट से एक्चुअल कितना है? 100 ग्राम कम है. आइडियल इज 1122, एक्चुअल इज 1120. सो हाउ मच इज दिस? इज लेस. एक्चुअल मास इज लेस कंपेयर्ड टू योर आइडियल गैस. हाउ मच इट इज लेस? डिफरेंस ले लेना. 1122 minus 1020, so this will be 102. Means about approximate पूछा. So this is 100 gram less than with respect to ideal. Is it clear, sir? देखो आंसर बोलो. 100 gram less than that obtained from ideal gas equation. Is it correct? बोलो sirs. 100 gram less than with respect to ideal. Clear? Good. Take this. करो. Come on. क्वेश्चन सब दिख रहे हैं सर? एक बार रिफ्रेश कर लेना. ओके. चलो लेट्स प्रोसीड. कम ऑन. ये करो. Come on. Read the question. दिख रहा है सर? सब क्लियर दिख रहा है? आपके चार्ट्स चाहिए. इज एवरीथिंग क्लियर?
दिख रहा है सब? इज एवरीथिंग फाइन? बोलो बोलो। ग्रेट ग्रेट। अब ये क्वेश्चन करेंगे सर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। For a pure substance, the following data is obtained. Look at carefully. Look at carefully. Now, आराम से. Assume that the vapor phase behaves ideally. The molar volume of the liquid is negligible. Which volume is negligible? Liquid mass. इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे. The latent heat of vaporization is constant over the temperature range. देखो, इस रेंज में latent heat of vaporization is constant. किस रेंज में? 370 से लेकर 350 इस रेंज में, मतलब वेदर यू कैलकुलेटेड 350, 360 और 370, इन दिस रेंज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज कांस्टेंट, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8.314 जूल। देखो कंफ्यूज मत होना सर, जूल है तो मोल है, किलो जूल है तो किलो मोल। फ्रॉम द अबव डेटा द एस्टिमेटेड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट 360 इज, सो इस रेंज में कहीं पे भी कैलकुलेट करना इट इज सेम। तो कैसे करेंगे सर? मैं बताता हूं सर, मैं इसको बताता हूं सर। वेयर इज दैट? आराम से इधर देखना सर। इज द क्वेश्चन ओके सर? बोलो रे। अब देखो आराम से, माय इक्वेशन सेज, क्लेपेरॉन इक्वेशन सेज dp by dt इज इक्वल टू क्या था सर? वो बोलो। हाँ, LH by T इंटू Vg minus Vf. Wait. आराम से सुनो. This is my Clapeyron equation. So Clapeyron equation say we get Clausius Clapeyron equation, but clearly he said liquid volume is negligible. So dP by dt is equal to LH by T into Vg. And he also said the vapor is behaving as an ideal gas. It is saturated vapor. The vapor is behaving as an ideal gas. No problem at all. The vapor is behaving as an ideal gas. No problem at all. इधर देखना. PV is equal to NR bar T. कोई दिक्कत है सर? PV is equal to NR bar T. आप बोलेंगे, sir, why are you not writing PV is equal to MRT? Both are correct, sirs. So if it is molar mass, it is universal gas constant. It is mass, it is characteristic gas constant. But problem में क्या दिया? मोलार बोला है, इसलिए मैं लिया। इधर देखना सर, ध्यान से सुनो। Look at my dear students. So can I write V by M is equal to R bar T by P? देखो रे, V by N is equal to R bar T by P, बिल्कुल लिख सकता हूं। It is sorry, V by N, I'm sorry, यहां पे रे, देखो, हाँ, V by N is R by T. So this is nothing but molar volume. This is nothing but molar volume. No problem at all. एक सेकंड रुको जरा, सबर करो। मोलार वॉल्यूम V by N को मोलार वॉल्यूम लिखूंगा. So molar volume is R bar T by P. So whenever it is molar, मोल्स में आता है तो बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आइए, so dP by dt is equal to LH by T. What is molar volume? R bar T by P. R bar, because he only said the vapor is behaving as an ideal gas. So all these I have told in my regular class. मैं अपने क्लास में क्लेपेरॉन से क्लॉजियस क्लेपेरॉन डिराइव करके सब बताया सर। P into LH, ये P ऊपर जाएगा, into LH by R bar into T is T square. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल्स। देखो, dP by P is equal to, ये P को इधर लेना, dP by P is equal to LH by R bar T by T square। कोई प्रॉब्लम है सर? dP by P is equal to LH by R, वेरिएबल सेपरेबल, dt को इधर ले जाना। Now you integrate from pressure P1 to pressure P2 and you integrate from temperature T1 to temperature T2। Clearly एक बात बताया, in this range latent heat is constant. Whenever it is constant, it is not, clearly बोला है, in the range of 350 to 370 the latent heat is constant. तो can I take it out of the integration? बिल्कुल ले सकता हूं सर। Already universal gas constant is constant, तो उसको भी बाहर ले सकता हूं। So therefore
dp by p is log p. Log p2 minus log p1 is directly ln p2 by p1 is equal to LH is constant, r bar is constant. Now what is integral 1 by t square? It is minus 1 by t. It is t1 and t2. So therefore, अरे यार इंटीग्रल 1 by t square, ओके समझ गए. Now ln p2 by p1 is equal to LH by r bar into अपर लिमिट माइनस 1 by t2, लोअर लिमिट माइनस ऑफ माइनस. अरे यार ये t2 आएगा इधर माइनस, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो इट विल बी 1 by t1 माइनस 1 by t2. ये होगा हमारा इक्वेशन. सो अब देखो, एंड द फाइनल इक्वेशन इज ln p2 by p1 इज इक्वल टू क्या है रे? ln p2 by p1 is LH by r bar, LH by r bar into LH by r bar into 1 by t1 minus 1 by t2, 1 by t1 minus 1 by t2. Absolutely. अब यहां पे p1 p2 t1 t2 is given. देखो एक बार, this is p1, this is p2, this is t1, this is t2. मैं डेटा ले रहा हूं सर, क्वेश्चन नंबर 39. देखो ऑलरेडी गिवन 39 क्वेश्चन. एक सेकंड रुको. Now I am taking the data. देखो एक बार, तो ln, when it is ratio, it doesn't matter whether it is in bar or kilopascal, it will get cancelled out. P2 is 1.386 and P1 is दिया है सर 0.693. latent heat by R bar is 8.314 and 1 by T1, and T1 is given as 350 and T2 is given as 370. So you will get the value of latent heat. Please calculate and give the answer. Please calculate and give the answer. आ रहा है सर? Wonderful. 37.3 kilojoule per kilomole. Exactly. 37.3 kilojoule per. No. अब ये यहां पे ट्विस्ट है सर. अब यहां पे ट्विस्ट है सर. ये एक सेकंड. अब यहां पे ट्विस्ट है सर. वेट. ट्विस्ट है, मैं बताता हूं. करेक्ट. क्या ट्विस्ट है मैं बताता हूं. इधर देखो. लेट मी कैलकुलेट. एक सेकंड. तो ये आ रहा है 37314 किलोजूल पर किलोमोल. दिस इज द आंसर. ये आ रहा है. सो क्यों किलोमोल? क्लियर. आंसर ये आ रहा है. इफ यू कैलकुलेट दिस, ये आ रहा है बिकॉज आर बार क्या है? किलोजूल पर किलोमोल केल्विन लिए थे. ओके, बट आंसर में क्या पूछा है सर? एक बार ऑप्शन देखना. प्लीज सी द ऑप्शन. बी केयरफुल. ही इज आस्किंग किलोजूल नॉट पर किलोमोल. यही तो इंपॉर्टेंट है. एंड मोर ओवर इट इज अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. इट इज किलोजूल पर किलोमोल. अब देखो ध्यान से सुनो सर. किलोमोल नहीं पूछा है, तो आई विल राइट दिस एज 37314.3 किलोजूल. किलो मीन्स 1000, मोल. ओके, वंडरफुल. तो ये हो गया 37.3 किलोजूल पर मोल. ऑब्जर्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. ये बहुत इंपॉर्टेंट. वंडरफुल स्टूडेंट्स. वाह अच्छे स्टूडेंट्स हैं सर आप. वेरी गुड. सिंपल है, ये करो.
हेलो, अच्छा मैं बताता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके ओके। See, this question is, he says, which of the following heat engine cycle represents maximum efficiency? ये पूछ रहा है कि there are 4 cycles given. Which of the following cycles represent? किस साइकिल का efficiency maximum है, ये पूछा है। किस साइकिल का efficiency maximum है, ये पूछ रहा है सर। All are clockwise. He is asking which cycle has maximum efficiency. Guess मारो, guess मारो सर। He is asking which cycle has maximum efficiency. This is temperature, entropy. Temperature, all are temperature entropies, all are temperature entropies, all are TS, and all are same क्या टेम्परेचर दिया, एक बार मैं बताता हूँ, 700 300 ना, या 700 300 700 300 700 same temperature, 700 300 700 300, and here entropy is 5, it is 1, here entropy is 5, it is 1, here entropy is 5, it is 1, here entropy is 5, and this is 1. Guess मारो सर, guess मारो सर। अब क्वेश्चन दिख रहा है सर? हाँ, गेस मारो। कैसे गेस मारेंगे सर इसको? अब क्वेश्चन क्लियर है? अभी अभी दिख रहा है आपको? एक बार देख लेना, एक बार देख लेना। हाँ, 4 cycles are given. In all, maximum minimum, maximum minimum, maximum minimum is same. Entropy change in all is same. Very good. He is asking which one has max, out of 4 cycles, which one has maximum efficiency? बहुत सिंपल है सर ये। देखो देखो एक बार, कलर ये वाला ले लेंगे। Efficiency is equal to net work by heat supply. My question to you people is, what is the closed area of all? What is the closed area of all? Anyone? What is the closed area of all? All triangles. उसी ट्रायंगल को समझ गए ना? अरे एक ही ट्रायंगल लेके अगर ऐसा ऐसा एक ही ट्रायंगल लेके ऐसा घुमाएंगे तो एरिया चेंज होगा सर, एरिया चेंज होगा सर। ऑल हैव सेम एरिया। कैसे? डाउट है तो देखना, हाफ इंटू बेस। व्हाट इज द बेस? 5 minus 1 is 4 into height 700 minus 300 is 400। इधर आइए, हाफ, हाइट इज दिस, बेस इज दिस, तो बेस डिफरेंस इज सेम, हाइट इज सेम। इधर आइए, बेस एंड हाइट सेम हाइट, बेस देखो, बेस एंड हाइट एग्जैक्टली, सो closed area is same. So what is closed area representing? What is closed area representing? Closed area तो same है सभी में, तो closed area क्या represent कर रहा है? Anyone? What is closed area representing? Net heat transfer on TS diagram. But net heat transfer is also equal to network transfer. So therefore, this closed area is representing network, 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 network. So all have same network. So when all have same network, which one will decide efficiency? सबका नेटवर्क सेम है तो कौन सा डिसाइड करेगा एफिशिएंसी? हीट सप्लाई। तो which one will have, ये तो डिनोमिनेटर में है, नेटवर्क इज सेम सर, नेटवर्क सब में सेम है। क्लोज एरिया, सेम ट्रायंगल को हम ऐसा घुमा रहे हैं, सो अगर ट्रायंगल का एरिया सेम है, रेक्टेंगल या ऐसा मान लो, इसको ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, एरिया तो सेम रहेगा। तो क्लोज एरिया इज सेम तो नेटवर्क इज सेम। दिस इज नॉट डिसाइडिंग। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाई। जिसमें हीट सप्लाई कम होगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा फॉर द सेम वर्क आउटपुट।
ये मत बोलना कि सर ने बोले कि किसमें हीट सप्लाई कम होगा एफिशिएंसी ज्यादा होगा, लेकिन सर ने बोला फॉर अ गिवन नेटवर्क, सो गिवन नेटवर्क के लिए, फॉर गिवन नेटवर्क, so if the heat supply is less, efficiency will be maximum. Just identify किसमें heat supply कम है, किसमें heat supply minimum है, जिसमें heat supply minimum है उसका efficiency will be maximum होगा. एक बार देखो, एक बार देखो सर, एक बार देखो. अभी हम कैलकुलेट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, भी कैलकुलेट करेंगे. देखो इधर देखो सर, in a reversible process, whenever the entropy is increasing, it means heat supply. Q जिसका कम होगा उसका, you're very good. So देखो, सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली. एंट्रोपी कम हो रहा है, हीट रिजेक्शन. एंट्रोपी इंक्रीज, हीट सप्लाई. Here the entropy is, देखो, look at the cycle. Entropy is decreasing, यहां से यहां हीट रिजेक्शन. एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, देखो यहां से यहां, ऑब्जर्व केयरफुली, इधर से इधर एंट्रोपी कम हुआ, इधर से इधर एंट्रोपी, अरे नहीं आ रहा है आपको, ये इनिशियल है, ये फाइनल है इस प्रोसेस के लिए. तो आप बताओ, एंट्रोपी कम हो रहा है, इधर ऐसा जा रहा है, तो एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग. सो दिस टू आर हीट रिजेक्शंस, हीट सप्लाई, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. सो दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग हीट सप्लाई इन फर्स्ट केस, दिस मच. सेकंड केस में देखेंगे, देखो entropy is increasing, heat supply. Entropy is increasing, heat supply. तो इसको, इस प्रोसेस को प्रोजेक्ट करना. इस प्रोसेस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी बढ़ रहा है तो हीट सप्लाई, तो प्रोजेक्ट करना. एंट्रोपी बढ़ रहा है तो हीट सप्लाई प्रोजेक्ट करना. तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना. दिस विल गिव मी हीट सप्लाई. सो डेफिनेटली इससे हीट सप्लाई इसमें कम है, क्योंकि ये और एरिया, ये और ये मिस हो रहा है इसमें. Because look at carefully, this and this is missing. इधर आइए, अपवर्ड. सो यहां पे देखो, इधर देखो सर, देखो इधर, इधर हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल एडिमेटिक, नो हीट ट्रांसफर. तो हीट सप्लाई, दिस कंप्लीट एरिया इज रिप्रेजेंटिंग हीट सप्लाई. ये दोनों में हीट सप्लाई सेम है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं. इधर देखो सर, देखो इधर हीट सप्लाई, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, हीट सप्लाई. तो इसको एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, हीट रिजेक्शन. तो इसी में हीट सप्लाई हो रहा है, इसमें नो हीट ट्रांसफर, रिवर्सिबल एडिमेटिक, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडिमेटिक, नो हीट ट्रांसफर. इसमें सप्लाई हो रहा है. इधर देखो, प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करो, ये पूरा एरिया हीट सप्लाई दे रहा है. ध्यान से देखो सर, इसमें ये भी मिस हुआ, ये भी मिस हुआ, इसमें सिर्फ ये मिस हुआ, लेकिन ये इंक्लूड हुआ. मींस इसके कंपैरिजन में इसमें हीट कम है और ये दोनों में हीट ज्यादा है, तो ये एफिशिएंट नहीं होगा. इसके कंपैरिजन में इसमें हीट कम है और इसके कंपैरिजन में इन दिस द हीट इज मोर. सो व्हेन द हीट इज मोर, एफिशिएंसी विल बी लेस. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी. हैव यू फॉलोड सर? नहीं आया सर, आपको नहीं आया सर, तो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये पूरा आ रहा है सर. डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? इज इट क्लियर और नॉट? एंट्रोपी इंक्रीज, हीट सप्लाई इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस. समझ में आया सर? अगेन अ गुड क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन. रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर. रीड दिस क्वेश्चन. वाह, ये वाला रीड करो एक बार. रीड करो. थैंक यू सयन देव. कैसा चल रहा है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स तो आप इमोशनल हो गए. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ले लो, ले लो, ले लो. An ideal gas is adiabatically and irreversibly compressed from
3 bar and 300 Kelvin to 6 bar in a closed system. Okay. Initial pressure, initial temperature, and final pressure. Let me write. 3 bar 300 to 6 bar. Correct na? 3 bar 300. 3 bar 300 to 6 bar. 3 bar 300 to 6 bar. Okay, no problem. No problem. Okay. The work required for irreversible compression is 1.5 times that the work required for reversible compression. Diya sir. The work required for irreversible compression is 1.5 times work required for reversible compression. Okay, no problem at all. Okay. Required for the compression from the same initial state temperature and to the same final pressure. Okay. The heat capacity, molar heat capacity of the gas at constant volume, CV is given. So what is CV given? मैं बताता हूँ sir. Question बहुत ही बढ़िया है sir. And CV is given. What is CV given? 30 joule per mole per Kelvin. It is 30 joule per mole per Kelvin. Okay. Assume to be okay. And R bar is 8.314 molar heat capacity. And देखो ratio of heat capacities मतलब CP by CV कितना है sir? 1.277. So gamma is given as 1.277. Okay. Any other data given? Any other data given? So the temperature rounded off to the first decimal in the final state in irreversible compression is. मैं बताता हूँ सर क्वेश्चन क्या है. मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है सर. मैं बताता हूं व्हाट इज दिस क्वेश्चन. सुनो सर, इधर देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सो दिस प्रेशर इज 3 बार एंड दिस प्रेशर इज 6 बार. द फ्लूइड इज कंप्रेस्ड. देखो एक बार, फ्रॉम 1 इसको 2s लेंगे एंड ये हो गया आपका बोल क्या रहा है सर? फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट इट इज कंप्रेस्ड टू सेम फाइनल प्रेशर. ध्यान से सुनो, दोनों में व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? अरे इनिशियली द कंप्रेशन इज बिगिनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से एक बार आप रिवर्सिबल कंप्रेस कर रहे हैं, एक बार आप इरिवर्सिबल कंप्रेस कर रहे हैं. सो in the irreversible compression, the work is 1.5 times the work of reversible. Definitely, जब compress कर रहे हैं तो input देना पड़ेगा. So when you are giving input due to irreversibilities, the work input will be more. So irreversible work is 1.5 times the reversible work दिया है. No problem at all. Now he is asking both compression, in both compressions, starting pressure and temperature is same. And after compression, the final pressure of reversible adiabatic compression and irreversible compression is same. So he is asking what is the final temperature after irreversible compression. वो ये पूछ रहा है सर, ये वैल्यू पूछ रहा है सर. कैसे करेंगे मैं आपको एक बात बताता हूं. इधर देखो सर, T2s by T1 is equal to P2s by P1 power gamma minus 1 by gamma. लिख सकता हूं सर. I can use this equation only for reversible adiabatic. Only इसके लिए I cannot apply T2 by T1 is P2 by P1 gamma minus 1 नहीं कर सकता सर. T2s by T1. What is T1? 300. P2s, whether it is 2s or 2, they are on the same pressure line. It is 6 bar. By P1, what is P1? 3. And gamma is given not 1 point. देखो कंफ्यूज मत होना, 1.277 दिया है. 1.277 minus 1 by 1.277. आप मुझे बताइए what is the temperature after reversible adiabatic compression? Anyone in the class, what is T2s? What is T2s? 348.67. Wonderful, sir. Wow. 348.67. 348.
0.67, बट वो ये नहीं पूछ रहा है सर, ही इज नॉट आस्किंग दिस। लुक एट, आप जानते हैं सर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क, अगर रिवर्सिबल की बात कर रहा है, एक सेकंड रुको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए व्हाट इज द वर्क, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। यहां पे मोलार दिया है, यानी इज इट दिस इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। देखो व्हाट इज P1 V1, n r बार T1, व्हाट इज P2 V2, n r बार T2 और MRT, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो रिवर्सिबल वर्क कैन बी रिटन एज n r bar by gamma minus 1 T1 minus T2. Wait. So the reversible work is given by how many moles is given in the problem? पर मोल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, पर मोल ले लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर मोल ले लेंगे। सो पर मोल 1, R bar is 8.314 and gamma is 1.277, T1 minus T2. What is T1? 300. And what is T2? What is T2? What is T2? 348.67. So everything is known. Please give me the value of work. Gamma minus 1, na? Gamma minus 1. Sorry. N R bar gamma minus 1. What is reversible work? What is reversible work? Anyone? What is reversible work? No one is giving. No one is giving. कहां पे दिया सर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी प्रॉब्लम में? हाँ, यस डेफिनेटली 1460 आया ना, 1461 करेक्ट, 1461, ग्रेट 1461 kilojule per kilomole. Okay, 1461. Now you tell me, yes, you are right, sir. What is the actual work? The actual work is 1.5 times the reversible work. So the actual work is 1.5 times 1460 कितना था? Reversible work कितना था? 1461. So can you give me actual का मतलब it is irreversible. What is this work? नहीं बोल रहे सर, कुछ नहीं बोल रहे। अरे व्हाट इज एक्चुअल, वो एक्चुअल वर्क इरिवर्सिबल का बोला है, 1.5 टाइम्स रिवर्सिबल बोला है सर, 2191.3। ओके, बट ही इज नॉट आस्किंग वर्क, ही इज आस्किंग, एनीवन इन द क्लास, ही इज आस्किंग टेम्परेचर। देखो d dash q is equal to du plus d dash w. This can be applied for reversible, irreversible, anything, but it is adiabatic. It is irreversible adiabatic, so heat transfer is 0. And what is du? NCV T2 minus T1 plus work. Wonderful, sirs. अब आप बताओ सर, why I have taken this n, I will take CV. मोलार में क्यों लिया? Because CV मोलार में दिया है, n नंबर ऑफ मोल्स 1 किलो मोल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और 1 मोल, एक सेकंड कहां गया ये, जूल पर मोल दिया, क्या दिया? अगर जूल पर मोल है, कहां गया रे वो, कहां गया रे वो, जूल पर मोल है तो मोल ही आएगा, सो मोल ही आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इधर देखो नाउ, शुड आई टेक वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव? Anyone in the class, should I take work positive or negative? Work को negative लेना है, because it is compression work. Common sense use करना सर, compress जब कर रहे हैं तो input is given to the fluid, that's why its internal energy is increasing. So this I will take it as minus. So work will be equal to, अगर ये minus है तो यहां लिखेंगे सर, don't worry, here I write number of moles is 1 and CV is given as 30, correct ना? CV is given as 30, is it correct? 30 दिया है, 30 दिया है ना, यस। एंड T2 इज नॉट नोन एंड T1 इज ऑलरेडी नोन। T1 कितना है सर? व्हाट इज T1? कंफ्यूज मत होना सर,
T1 कितना है रे? 300. 300. T1 कितना है? 300. 0 इज इक्वल टू वर्क कितना है? 2193.3. सम स्टूडेंट सेड सर ये तो मोल में दिया है, लेकिन ये वर्क किलोजूल पर किलोमोल. कांट आई राइट दिस एज किलो किलो कट गया तो जूल पर मोल नहीं लिख सकता हो सर? जूल पर मोल, अगर इसको मोल लेता हूं तो ये भी मोल में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. किलो किलो और मोल, किलो जूल किलो मोल और जूल मूल. इज इट ओके? एनीवन विथ T2? एनीवन विथ T2? आई थिंक T2 इज 373. ऑब्वियसली क्या प्रूव हो गया सर? ऑब्वियसली क्या प्रूव हो गया सर? क्या प्रूव होगा? इधर देखना क्या प्रूव होगा. डेफिनेटली T2s कितना है रे? 348. दिस इज 348. डेफिनेटली 348 से 373 इज मोर, मतलब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का ज्यादा है. इज इट ओके? समझ में नहीं आया सर आपको? प्लीज बताइए, हैव यू फॉलोड? लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. 4 घंटे लिए सर, बस है, ज्यादा नहीं लेंगे. अब आप पढ़ लेना. एक सेकेंड. 29th क्वेश्चन. 29th क्वेश्चन. प्लीज रीड दिस. My dear students, please read this. Please read this. Wonderful, Pranjal Dikshit. Wonderful. Sir, I have done by isentropic efficiency. Absolutely correct. देखो देखो इसको isentropic efficiency से करेंगे. What is isentropic efficiency? It is the actual work by isentropic. लेकिन यहां पे it will be isentropic work by actual work. तो isentropic efficiency कितना आ रहा है? Isentropic work by actual work. Isentropic means reversible and efficiency is reversible. Isentropic by actual work is 1.5. तो 1 by 1.5 यहां से भी कर सकते हैं आप. ब्यूटीफुल सर. वो तो फटाक से आएगा, वो तो फौरन आएगा. इज इट क्लियर? वाह वाह, क्या स्टूडेंट्स है रे बाबा. ग्रेट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. Take this question and I love this question. एक बार देखना सर. Wonderful, got the same answer. वाह वाह वाह, wonderful wonderful. ये क्वेश्चन ले लेना सर. What a question this is. What a question this is. 2 kg of steam in a piston cylinder device at 400 kilopascal and 175 undergoes a reversible isothermal compression to a final pressure such that it becomes just saturated. What is the work required for the process? क्या क्वेश्चन है सर? इधर देखो एक बार रीड, you just read the question. हाँ, 400 किलो पास्कल पे. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो स्टीम टेबल देखा सर. व्हेन आई सॉ स्टीम टेबल्स एट 400 किलो पास्कल द सैचुरेशन टेम्परेचर इज अबाउट 143. ये कुछ 143 कुछ है सर, जरूरी नहीं आपको देखना. सो एट 400 किलो पास्कल द सैचुरेशन टेम्परेचर इज अबाउट 143 कुछ है सर. ओके, degree centigrade. So what is our temperature at 400? 175. Definitely 175 means वो ज्यादा है. Somewhere here. It is my initial state. Now it is compressed isothermally to become just saturated. मतलब it should follow a horizontal line. इधर देखो, it should follow horizontal line. Why? Because isothermal compression है. Isothermal, just it becomes saturated. तो यहां से यहां हो गया सर. So I repeat the question. Initially my system is at 400 kilopascal and its temperature is 175 and it is compressed so that it becomes just saturated. This is the final state and he is asking what is the work done. क्या क्वेश्चन है सर? What a question this is. कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे अब मैं बताता हूं, सुनो देखो एक बार, look at carefully, look at carefully. What is this diagram, sir? It is TS diagram. So let me project this. Let me project this. Can anyone tell ये एरिया क्या देगा हमें? Anyone tell? ये क्लियरली बोला है रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट एरिया. सो कैन आई कैलकुलेट दिस एरिया? दिस एरिया दैट विल गिव मी हीट ट्रांसफर, दैट विल गिव मी हीट ट्रांसफर. इज इट क्लियर सर? तो हाउ डू, लेकिन ये टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. आपको नहीं आ रहा सर. टाइम कितना हुआ सर? एट 5 o'clock आई हैव टू गो. नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा सर. एक सेकंड रुको. Actually, initially the system is at 175 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको केल्विन में कन्वर्ट करना. 273 प्लस 175 इज कितना आएगा सर? 1 2 3 448. तो दिस इज 448 केल्विन. इज इट 175? एक बार देखना. इज इट 175? यस यस यस. नाउ इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम दिस स्टेट isothermally just to become saturated. This is the final state. तो आप बताइए सर, let this entropy be S1, let this entropy be S2. Can you tell me what is this area giving? What is this area giving? Anyone in the class? Anyone in the class? It is the heat transfer. It is the heat transfer. Is it clear, sir? Is it clear, sir? It is heat transfer. Okay. So is S1 given in the problem? टेबल में दिया सर. प्रॉब्लम में S1 S2 दोनों भी दिया है सर. क्वेश्चन नंबर क्या है सर? ये व्हाट इज दिस क्वेश्चन सर? 29 ना? हाँ, यहां पे एवरीथिंग इज गिवन सर, एवरीथिंग इज गिवन. ये एंट्रोपी दिया है, प्रॉब्लम में दिया है सर. At 400 kilopascal 175 degree centigrade, this pressure is 400. At 400 kilopascal 175 degree centigrade, इस पॉइंट पे एंट्रोपी इज गिवन एज 7.055 एंड इस पॉइंट का एंट्रोपी इज ऑल्सो गिवन. हाउ मच इज दैट? 6.622. एक्सलेंट. तो कैन आई कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू व्हाट? टेम्परेचर. देखो, टेम्परेचर इनटू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल S2 minus S1, length into width, length into width. So what is this? 448. S2 minus S1. What is S2 minus S1? ध्यान से सुनो सर. S2 is given as 6.622 and S1 is 7.055. तो आ रहा है आंसर कितना आ रहा है सर? This is minus 193.99 kilojoule per kg. What does negative sign show? Obviously, you know that in an isothermal process, when you compress, heat is rejected. The negative sign shows heat is rejected. तो आप पूछेंगे, सर आपने हीट ट्रांसफर क्यों कैलकुलेट किया? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. सर व्हाई डिड यू कैलकुलेट हीट ट्रांसफर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर. देखो देखो, फुल्ली देखो सर, आपने क्यों कैलकुलेट किया? देखो, d dash q is equal to du plus d dash w. He is asking work. So d dash q, heat transfer is known. Heat transfer is known. Minus 193.99 is equal to du. Du is what? U2 minus U1. U2 minus U1. In the problem, internal energy is given here. Internal energy is given here. So du is U2 minus U1 plus work. एक बार देखना. देखो, let me do this. Question number क्या है सर ये? In the problem, देखो एक बार 193.99. यहां का इंटरनल एनर्जी इज गिवन, सैचुरेटेड इंटरनल एनर्जी इज गिवन, यहां का इंटरनल एनर्जी इज गिवन एंड दैट इज 2579. इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन एंड U1 इज गिवन एज 2606 प्लस वर्क. अब आया नहीं है सर समझ में? अब आया नहीं है सर? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. You are not getting, my dear students. So from TS diagram, I have calculated the heat transfer. From values given, internal energies are given. I took change in internal energy. ये भी आएगा. So I will get the value of work. But all these are per kg. All these are per kg. कितना आ रहा है सर? It is minus 166.
-166.9 किलोजूल पर केजी, लेकिन वो किलोजूल में पूछा है. He asked in kilojoule, sirs, but mass is given. Mass is given. What is the mass given? In the problem, mass is given as 2 kg. So therefore, it is 166.9. It is for 1 kg. Mass is given as 2. तो कितना आ रहा है सर ये? I think it is 334 आ रहा है. What does negative sign show? What does negative sign show? Anyone in the class? What does negative sign show? Negative sign क्या show कर रहा है? Please tell me. What is negative sign showing? What is negative sign showing? Anyone in the class? Work is done on the system. वाह. So आज के लिए बस इतना, my dear students. Hope you have enjoyed. Hope you have enjoyed. मैं तो टाइम ही वेस्ट नहीं किया सर. Every second is utilized properly. Yes or no? So please, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, फीडबैक देना आपका. प्लीज यू हैव टू गिव सो दैट इट मोटिवेट्स अस. वंडरफुल सेशन. सो आई विल डू इट इन क्लास बिकॉज वो अभी एक्सी के लिए जरूरी नहीं है. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप मैसेज करना मुझे, मैं इसका लिंक दे दूंगा सर. आप मैसेज करना ऑन दिस नंबर. यू मैसेज मी ऑन दिस नंबर. मैं आपको ये शेयर करूंगा, ठीक है. तो इसका कुछ आता है, जुगाड़ करेंगे. एक सेकंड. सेव एज, हाँ डेस्कटॉप पे इसको क्या सेव करेंगे. हाँ, बन रहा है सर, बन रहा है. सेविंग फाइल. अब अरे हम भी सीख लिए. वी टू हैव लर्न्ड. वाह. You message me, I'll share this. Okay, thank you. Saved. Save होगा, हम शेयर करेंगे. I will save. Okay, I will share with you. Don't worry. So खुश हो गए. Wonderful session. Thank you, thank you, thank you. चलो, bye bye. Please. बोला था सर, वो जरूरी नहीं है सर अब, लेकिन मैं क्लास में करवाऊंगा या फिर कभी सेशन में करवाऊंगा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस किए ना रे. कमेंट के फॉर्म में शेयर करना. ओके, राइट. 10th फरवरी से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है प्लस पे. इट इज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस and brand new questions are coming. Okay, thank you. आज के लिए बस इतना. Bye bye. I'm ending the session. Bye bye.